शिरगांव क्रिकेटर्स कॅप्टन हांगा पावलो आसा. गजांतलक्ष्मी कॅप्टनाक रिक्वेस्ट आसा की तेणी हांगा टॉसा खातीर येवचें. सारकें एक्झॅक्टली 2:30 ही मॅच स्टार्ट जातली. सो टायम वेस्ट करनासतना कॅप्टनाक रिक्वेस्ट आसा की हांगा टॉसा खातीर येवचें. ग्राउंड्स जे आसा पयला तुजी डिसिजन कितें आसतली? आमी बॉलिंग करतले पयलीं आनी 160 रेस्ट्रिक्ट करूंक सोदताले तांकां. सो बॉलिंग करपाचो निर्णय आसा हेजे फाटल्यान बॉलिंग घेवपाचे फाटल्यान? कांय ना, फिल्डींग आमकां टायट करची पडटली आनी टार्गेट काय कळना. सो आमी 160 विदीन रेस्ट्रिक्ट करून चेस करपाक सोदतले आनी कांय ना. सो थँक्यू, बेस्ट. सो टॉस तुमी हरले आसात. तुमी जर टॉस जिखले जाल्यार तुमी कितें करता आसले? आमी बॉलिंगूच करपाचें आसलें. आमकां खबर ना टार्गेट सेट जायना की खंयचो टार्गेट चेस जाता. फाटल्या मॅची 200 वयर टार्गेट चेस जाला. सो आमकां बॉलिंगूच करूंक जाय आसली. सो ना कितें दोनूय वाटेन आतां हें करचें पडटा कितें बॅटींग करून आमकां बरो स्कोर करचो पडटलो. सो तुमकां कितलो स्कोर जो आसा तुमकां सेफ दिसतात की पीच पयली किंवा कंडिशन पयली जाल्यार? 180 प्लस म्हाका दिसता बरो स्कोर ह्या ग्रावंडार. बॉलिंग आमचो जो बॉलिंग अटॅक आहा त्या हिसपान आमकां 180 प्लस बरो. ओके, थँक्यू. सो ऑल द बेस्ट. And the news from the center is that Gajantlaxmi won the toss and decided to field first.
आज के दिन की ये दूसरी मैच होने जा रही है शिरगांव क्रिकेटर्स वर्सेस गजांतलक्ष्मी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब के बीच। और ये टॉस जो है जीता है गजांतलक्ष्मी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब ने और पहले गेंदबाजी करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। दो एम्पायर वहाँ पर इंतजार कर रहे टीम का फाइनल प्लेयर। दोनों ही टीमों जो है अपने अपने प्लेयरों के साथ यहाँ पर हो रही है। तो ये मैच यहाँ पर कुछ चंद ही मिनटों में मैच शुरू होगी। तो दोनों ही तगड़ी टीमें शिरगांव क्रिकेटर्स वर्सेस गजांतलक्ष्मी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टीम, दोनों के बीच ये भिड़ंत आज होने जा रही है इस टूर्नामेंट की आज के दिन की दूसरी मैच। आज के दिन का पहला मैच हुआ था काले वॉरियर्स वर्सेस साई बाबा अमोना और इस मैच में साई बाबा अमोना ने जीतकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया है आज के दिन। और आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला होने जा रहा है गजांतलक्ष्मी वर्सेस शिरगांव क्रिकेटर्स के बीच। और ये मुकाबला जो है कड़ा मुकाबला, दोनों ही टीम जो है बहुत ही बढ़िया प्लेयर दोनों ही टीमों के पास। और देखते हैं कि इस मैच में ये मैच जो है किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है तगड़ी है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स दोनों टीमों के पास है। और शिरगांव क्रिकेटर्स के दो ओपनिंग बल्लेबाज क्रीज पर मैदान पर जाते हुए धीरे धीरे विश्वतेज वांगणकर और अविनाश गावस दो यहाँ पर ओपनिंग बल्लेबाज और एम्पायर के कॉल का यहाँ पर इंतजार। मैच शुरू यहाँ पर होने के लिए एम्पायर का जो इशारा है उसकी प्रतीक्षा यहाँ पर हो रही है। तो दो ओपनर यहाँ पर तैयार। तो टारगेट यहाँ पर देखेंगे कि कितना सेट करते हैं इस मैच में, दूसरा मैच इस आज के दिन का। अंबर नाइक का बॉलिंग मार्क पर गजांतलक्ष्मी की ओर से ये मुकाबला कड़ा, जिस तरह से मैंने कहा था कि देखते हैं तगड़े बैट्समैन, उतनी बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है बहुत ही बढ़िया है गजांतलक्ष्मी के पास। और यहाँ पर एम्पायर का इशारा आता हुआ लेट्स प्ले का तो पहली गेंद इस मैच की और पहली गेंद वहां पर लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ और उसी के साथ कीपर से मिस होकर चौका। तो खराब शुरुआत यहां पर अंबर द्वारा कही जाएगी, क्योंकि पहली गेंद और पहली गेंद बहुत ही दूर, जी हम यहां देख सकते हैं रिप्ले में कि बहुत दूर गई, कीपर से भी बहुत दूर। उसी के बदौलत ये चौका मिला और अतिरिक्त 5 रन बिना किसी गेंद यहां पर किए मिले हैं शिरगांव क्रिकेटर्स को। तो यहां पर शिरगांव क्रिकेटर्स के लिए बहुत ही बढ़िया शुरुआत, लेकिन अच्छी शुरुआत नहीं कही जाएगी गजांतलक्ष्मी के लिए। 5 रन लगे हैं बोर्ड पर। इस बार यहां पर बढ़िया गेंद, जो पिछली गेंद पर जो गलती हुई थी उस गलती को सुधारा और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद सीधी कीपर के दस्ताने में जाती हुई डॉट गेंद। तो पहली गेंद के बाद ये गेंद जो है यहाँ पर थोड़ी सी राहत दिलाएगी अंबर को, क्योंकि 5 रन बिना किसी गेंद किए यहाँ पर हुए थे और उसी के बदौलत दूसरी गेंद बढ़िया।
इस बार यहाँ पर देखेंगे इशारा, वाइड का इशारा, फिर एक बार पिछली गेंद जो रही थी वो लेग स्टंप से बाहर गई थी, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से काफी दूर जाती हुई इस बार अच्छा कलेक्शन कीपर का, और एक रन यहाँ पर जुड़ता हुआ वाइड के रूप में। तो अतिरिक्त रन यहाँ पर मिले हैं 6। शुरुआत अच्छी नहीं कही जाएगी अंबर द्वारा। फिर एक बार यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ, तो एक गेंद बढ़िया रही थी, लेकिन बाकी 3 गेंदें जो है खराब। यहाँ पर शुरुआत 7 रन बन चुके हैं इस गेंद के साथ, तो तीसरा वाइड इस ओवर का। अंबर को यहाँ पर अपने लाइन और लेंथ के साथ काम करना पड़ेगा, अच्छी लाइन अच्छी लेंथ के साथ, क्योंकि ऑलरेडी 7 रन लग चुके हैं बोर्ड पर और केवल एक ही गेंद अब तक हुई है। इस बार अच्छी गेंद, वहां पर कवर्स में फील्डर मौजूद, एक ही रन। जी हाँ, यहाँ पर रन नहीं लिया, फील्डर ने बॉल को पकड़ा और इस रन की आशंका को समाप्त किया। अगली गेंद हल्के हाथों से खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन इस बार आसानी से दौड़कर, तो ये गेंद जो है अच्छी गेंद, थोड़ी सी दिशा से भटके थे। वाइड 3 गेंदें की इस ओवर में, 8 रन लगे हैं बोर्ड पर, लेकिन उसके बाद ये गेंद बहुत ही बढ़िया। तो इसी तरह से अतिरिक्त रन यहाँ पर जब जब आएंगे तो बॉलिंग या बॉलर पर यहाँ पर प्रेशर जरूर बढ़ेगा। अंबर यहाँ पर पहली ओवर गजांतलक्ष्मी की ओर से। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, कोई मौका नहीं शॉट खेलने का, और एक डॉट गेंद यहां पर आती हुई। 8 पर रुका हुआ स्कोर। पहली ओवर प्रगति पर मैच शिगांव क्रिकेटर्स और गजांतलक्ष्मी के बीच, और पहली ओवर में अब तक 8 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। इस बार यहां पर अपील जरूर हुई है, लेकिन एम्पायर पर कोई असर नहीं इस अपील का, और एक डॉट गेंद यहां पर। बहुत ही बढ़िया गेंद, जो 3 वाइड रही थी उसके बाद वापसी बहुत ही अच्छे, क्योंकि 8 रन यहां पर लग चुके हैं बोर्ड पर। 7 रन जो है वाइड के रूप में मिले थे, लेकिन केवल एक ही रन इस ओवर में बल्ले से आया है, उसी की बदौलत ये बढ़िया ओवर। नीचे रही गेंद, पढ़ नहीं पाए, और उसी के साथ यहां पर और एक डॉट गेंद, और उसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई अंबर की। 8 रन आए इस ओवर में बिना किसी नुकसान के। दूसरी ओवर यहां पर गजांतलक्ष्मी की ओर से साहिल नायक। पहली ओवर में काफी कुछ घटा, 7 रन मिले थे एक्स्ट्रा वाइड के रूप में, लेकिन उसके बावजूद ये बढ़िया ओवर कही जाएगी, क्योंकि सिर्फ 1 रन आया था बल्ले से उस ओवर में। स्ट्राइक पर होंगे विश्व तेज, और बढ़िया गेंद यहां पर, एक करारा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ के साथ यहां पर शुरुआत बहुत ही बढ़िया की है साहिल ने। और यहां पर मोमेंटम जो है उसे बनाना चाहते हैं। पहला फ्री हिट यहां पर लिया है। स्ट्राइक पर होंगे अविनाश, और इस फ्री हिट जी नहीं, यहां पर वाइड का इशारा आता हुआ, और एक यहां पर अतिरिक्त रन के रूप में जुड़ता हुआ रन में। तो ये फ्री हिट जो है यहां पर अभी लिया था, कैंसिल किया है, क्योंकि वाइड के रूप में एक रन यहां पर जुड़ा है, तो बाद में यहां पर लेने के लिए रखा है इस फ्री हिट को। इस बार यहां पर बढ़िया गति, बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ छोड़ा, कोई यहां पर प्रयास नहीं शॉट खेलने का।
तो 9 रन अब तक लग चुके हैं बोर्ड पर और जो 9 में से 8 रन जो है एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं, केवल 1 रन जो है बल्ले से बना है। तो यहाँ पर मिश्रित बॉलिंग, वाइड भी दिए है और डॉट गेंदें भी यहाँ पर आई है। इस बार फिर एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन फिर एक बार यहाँ पर बढ़िया गेंद, लाइन और लेंथ बहुत ही बढ़िया। ड्राइव करना चाहते थे बॉल को, लेकिन चूके और एक अतिरिक्त अरे डॉट गेंद यहां पर आती हुई 9 पर रुका हुआ स्कोर। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन जो बढ़िया गेंद यहां पर चल रही है उसी को बरकरार रखते हुए और एक डॉट गेंद। तो अब तक बल्लेबाजों को मौका नहीं मिला है बड़े हिट लगाने का। इस बार प्रयास किया था जरूर, अविनाश ने कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन आई नहीं गेंद बल्ले पर और एक डॉट गेंद यहां पर 9 पर रुका हुआ स्कोर बिना किसी नुकसान के। इस बार यहां पर फिर एक बार डॉट गेंद। तो लगातार यहां पर डॉट गेंदे जैसे जैसे आएंगी उतना ही प्रेशर जो है शिरगांव क्रिकेटर्स के ऊपर बढ़ता जाएगा। तो अब तक खामोश रखने में कामयाबी मिली है साहिल को। केवल 1 ही रन आया है अब तक इस ओवर में साहिल के। इस बार यहां पर पॉइंट की दिशा में खेला, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन कंप्लीट और दूसरे रन की यहां पर कोशिश और दूसरा रन भी यहां पर आसानी से मिलेगा। तो ये बढ़िया शॉट, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा इस शॉट के पास बाद, क्योंकि बहुत सारी डॉट गेंदे जो है इस ओवर में आई थी। और उसी के साथ यहां पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 लगा है बोर्ड पर, स्कोर बिना किसी नुकसान के। अंबर नायक दूसरी ओवर लेकर अपने पहले ओवर में 8 रन आए थे अंबर के। इस बार बढ़िया शुरुआत, पहली गेंद डॉट गेंद। पिछली ओवर में जो पहली गेंद की थी वाइड रही थी और चौका भी मिला था, क्योंकि बहुत दूर गई थी कीपर से, उसी की बदौलत चौका मिला था। लेकिन उसके बाद जो गेंदे की है अंबर ने बहुत ही बढ़िया, और दूसरी ओवर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया। शुरुआत थोड़ी सी धीमी है लेकिन विकेट नहीं खोए है। और फिर एक बार यहां पर अपील बड़ी हुई है, लेकिन कोई असर नहीं एम्पायर पर, और एक डॉट गेंद जो है यहां पर मिलती हुई अंबर को। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर रखी थी गेंद, ड्राइव जरूर करना चाहते थे लेकिन आई नहीं बल्ले पर, और उसी की बदौलत अब तक दोनों ही बॉलर जिनका इस्तेमाल किया है गजांतलक्ष्मी क्रिकेटर्स ने बढ़िया रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, फ्लिक किया, बहुत ही बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल, और ये गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका आता हुआ बल्ले से, और ये शॉट जो है काफी कॉन्फिडेंस जो है यहां पर देगा विश्व तेज को, क्योंकि ये शॉट बढ़िया 4 रन जब चौके लगते हैं, चौके छक्के लगते हैं, तो बैट्समैन का कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एक अच्छी पारी जो है उस देखने की आशंका जो है सबको होगी विश्व तेज के बल्ले से। इस बार नीची रही गेंद, जब नीची रहती है गेंद तो बहुत तकलीफ होती है बैट्समैन को खेलने में, और पिच जो है यहाँ पर बॉलरों के लिए मददगार साबित होती हुई। बहुत नीची रही गेंद, टप्पा पड़ा और वहीं से गेंद जो है पीछे चली गई। तो ये गेंद बढ़िया 15 पर रुका हुआ स्कोर बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर है प्रगति पर।
अगली गेंद वही दिशा और पिछला जो चौका गया था लगभग उसी का रिप्ले यहाँ पर उसी क्षेत्र में उसी स्टाइल से खेला गया शॉट, दूसरा चौका आता हुआ इस ओवर में और ये और जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा क्योंकि एक चौका लगा था ऑलरेडी और ये दूसरा चौका लगा है इस ओवर में। तो दो ओवरों में शुरुआत जो है थोड़ी सी धीमी रही थी लेकिन इस ओवर में दो चौके के मदद से 19 पर पहुंचा है स्कोर, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और स्कोर भी बढ़कर हुआ है 19। तीसरा ओवर है प्रगति पर। इस बार फुल लेंथ गेंद लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ ऑफ स्टंप से दूर जाती हुई गेंद यहां पर और वाइड का इशारा और एक रन यहां पर जुड़ता हुआ और इसी के साथ 20 रन जो है लगे हैं बोर्ड पर। फुल लेंथ गेंद थी लेकिन बहुत ही दूर बैट्समैन से, इसलिए वाइड का करार दिया गया। इस बार यहां पर लेकिन बढ़िया गेंद कहने जा रहा था लेकिन बाही खोली वहां पर अंपायर ने और एक गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और फिर एक बार यहां पर वाइड। तो कई सारे वाइड जो है इस मैच में अंबर द्वारा किए गए हैं, तो ये कितने महंगे पड़ेंगे बाद में जाकर पता चलेगा, लेकिन जो यहां पर फाइन लेग पर फील्डर था उसे पीछे कर दिया गया है। दो चौके लगे थे, थर्ड मैन की दिशा में गाइड किया गेंद को और बहुत ही रक्षात्मक तरीके से खेलकर एक रन यहां पर जोड़ा है टोटल में और उसी के साथ 3 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त। 22 लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। चौथा ओवर इस मैच का और साहिल अपना दूसरा ओवर यहां पर लेकर बॉलिंग मार्क पर मौजूद। शिगांव क्रिकेटर्स 22 रन लगा चुके हैं अब तक बोर्ड पर और खास बात यह है कि विकेट जो है 10 के 10 हाथ में है। अगर विकेट हाथ में रहे तो बाद में जाकर एक्सेलरेट कर सकते हैं, बड़े हिट लगा सकते हैं और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन इस बार साहिल है बॉलिंग मार्क पर। और ये जो वाइड का सिलसिला है ये रुकने का नाम यहां पर नहीं ले रहा है। अंबर द्वारा कई सारे वाइड हमने देखे लेकिन इस बार साहिल भी उसी पार्टी में जुड़ता हुआ। साहिल के द्वारा ये वाइड का गेंद जो है एम्पायर ने करार दी है और उसी के बदौलत 23 पर पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। फिर एक बार ये बढ़िया गेंद, इस गेंद पर कोई मौका नहीं। तो साहिल की पहली ओवर जो रही थी केवल 3 ही रन दिए थे, इस ओवर में एक वाइड की वजह से 1 रन, लेकिन यहाँ पर साहिल ने जो गेंदें की है बहुत ही बढ़िया। अगर वाइड को छोड़ दिया जाए तो बाकी गेंदें जो है बहुत ही बढ़िया रही है साहिल की। 23 लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। इस बार फिर एक बार बढ़िया गेंद, डॉट गेंद, और डॉट गेंदें जब जब आती है प्रेशर जो है बढ़ता जाता है। यहाँ पर धीमी शुरुआत कही जाएगी शिरगांव क्रिकेटर्स की। चौथा ओवर प्रगति पर और 23 रन लगे हैं अब तक बोर्ड पर। लगभग 7 रन प्रति ओवर की रन गति से यहाँ पर रन जो है आगे बढ़ रहे हैं। इस बार ड्राइव करने की कोशिश थी लेकिन फिर एक बार यहाँ पर साहिल द्वारा डॉट गेंद, बहुत ही बढ़िया एक्शन के साथ यहाँ साहिल, बहुत ही कूल एक्शन, और ये पढ़कर थोड़ी सी बाहर निकली गेंद। शॉट हालांकि खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पर आई नहीं। चौथा ओवर प्रगति पर 23 लगे हैं। यहाँ पर कुछ बातचीत चल रही है क्योंकि डॉट गेंदें जो है बहुत सारी यहाँ पर आई है। साहिल, दूसरी ओवर साहिल की और केवल इस ओवर में अब तक 1 ही रन दिया है। 23 लगे हैं बोर्ड पर। फिर एक बार वही ड्राइव करना चाहते थे लेकिन इस बार भी चूके और एक डॉट गेंद यहाँ पर।
साहिल की पहली गेंद वाइड रही थी, लेकिन उसके बाद जो गेंदे की ही बहुत ही बढ़िया सटीक लाइन और लेंथ के साथ कोई मौका नहीं यहाँ पर विश्व तेज के लिए शॉट खेलने का। पावर सॉरी पहला यहाँ पर फ्री हिट लिया है। देखते हैं कितना इस्तेमाल करते हैं इस फ्री हिट का। और ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेंद अपील यहाँ पर, लेकिन ये फ्री हिट आउट नहीं दिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया गेंद। फ्री हिट जो है जब लिया जाता है जब थोड़े से प्रेशर में होते हैं बल्लेबाज, कोई बॉलर जब बढ़िया बॉलिंग करता है तब लिया जाता है, स्कोर को जब एक्सलेट करना हो। लेकिन इस फ्री हिट का यहाँ पर फायदा नहीं उठा पाए, डॉट गेंद आई तो पहला फ्री हिट जो है वो शिरगांव क्रिकेटर्स के हित में नहीं जाता हुआ। 23 लगे हैं बोर्ड पर। शॉट ऑफ लेंथ गेंद, हवा में गेंद, पीछे फील्डर यहाँ पर कोशिश, थर्ड मैन का फील्डर, लेकिन फील्डर से दूर रही गेंद और उसी बीच एक रन यहाँ पर दौड़कर कंप्लीट किया। तो इसी के साथ यहाँ पर 4 ओवर का खेल समाप्त। 24 लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। प्रणय तारीफ तीसरा बॉलर इस्तेमाल किया है कप्तान ने। 24 लगे हैं बोर्ड पर अब तक। और पहली गेंद, शुरुआत काफी अच्छी। तो जो बॉलर यहां पर इस्तेमाल किए हैं आज सभी बॉलर ने, अंबर, उसके बाद साहिल, अबर, प्रणय, बढ़िया बॉलिंग। शॉट लगाने के यहां पर मौके नहीं दे रहे हैं। 24 रन, लगभग 6 रन प्रति ओवर की रन गति से रन जो है आगे बढ़ रहे हैं। 5वां ओवर प्रगति पर और पहली गेंद प्रणय की बहुत ही बढ़िया। इस बार आ गया, एक कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन यहां पर कीपर ने हिट डायरेक्ट लगाई थी, लेकिन यहां पर रन नहीं मिलेगा। तो दूसरी गेंद यहां पर डॉट। प्रणय की यहां पर बहुत ही बढ़िया शुरुआत, कदमों का इस्तेमाल किया, पड़कर थोड़ा सा काटा बदला गेंद ने, इसीलिए बल्ले पर आई नहीं, चढ़ी नहीं, उसी वजह से डॉट गेंदों का ये सिलसिला जो है जारी है। जो पिच है वो बॉलर के लिए मददगार यहां पर साबित हो रही है। गेंदें जो है नीचे रह रही है, इसलिए बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अगर 150 तक ये स्कोर पहुंचता है तो एक हित में जा रही है पिच। फिर एक बार वही गेंद, उसी दिशा में उसी स्टाइल में की गई गेंद, और फिर एक डॉट गेंद यहां पर। 24 पर रुका हुआ है स्कोर। विश्व तेज जो है प्रयास बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं बल्ले पर, उसी की वजह से 24 पर रुका हुआ है स्कोर 5 ओवर प्रगति पर। और प्रणय यहां पर खतरनाक बॉलिंग करते हुए। इस बार यहां पर शॉट के लिए है पीछे फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन पर, और एक रन मिलेगा और इस एक रन को जोड़कर 25 पर पहुंचा है। उसी के साथ 5 ओवरों का एक खेल से यहां पर समाप्त होता हुआ 25 लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के।
साहिल अपनी तीसरी ओवर, 2 ओवरों में केवल 5 ही रन दिए हैं साहिल ने अब तक, और तीसरी ओवर का जिम्मा जो है कप्तान ने सौंपा है साहिल पर। इस बार यहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन इस कोशिश में कामयाबी अब तक नहीं मिल रही है दोनों ही बैट्समैनों को। विश्वजीत प्रयास तो काफी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर संपर्क नहीं हो रहा है। चौके 2 लगे हैं इस इनिंग में जरूर, लेकिन उसके बाद खामोश रखा है बल्लेबाजों को। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, पीछे फील्डर मौजूद मिड विकेट क्षेत्र में, और उसी के साथ 1 रन यहां पर जुड़ा है टोटल में। तो बहुत देर बाद अब स्ट्राइक पर होंगे अविनाश। स्ट्राइक जो है उनके विश्व तेज के पास ही थी कहीं गेंदों तक, लेकिन बहुत देर बाद स्ट्राइक पर पहुंचे हैं। देखते हैं यहां पर सेकेंड फ्री हिट जो है यहां पर लेने का निर्णय लिया है अविनाश ने। देखते हैं इस फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं अविनाश। और ये यहां पर हवा में जरूर रही थी गेंद, लेकिन फील्डर से दूर, रन आउट होने की संभावना, लेकिन यहां पर साहिल कलेक्ट नहीं कर पाए गेंद को, और उसी बीच 1 रन दौड़कर कंप्लीट किया। तो फ्री हिट जरूर यहां पर लिया था, उसका फायदा जितना उठाना चाहते थे उतना नहीं उठा पाए, केवल 1 ही रन मिला इस फ्री हिट पर, और उसी की बदौलत 27 पर पहुंचा है स्कोर बिना किसी नुकसान के। 6ठी ओवर है प्रगति पर। फिर एक बार यहां पर साहिल की बहुत ही बढ़िया तेजी के साथ जाती हुई कीपर के हाथ में, और एक डॉट गेंद। शिरगांव क्रिकेटर्स को यहां पर गियर्स बदलना होगा, क्योंकि 27 रन नहीं लगा चुके हैं बोर्ड पर अब तक। फिर एक बार यहां पर करारा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार ऑफ टर्म से बाहर जाती हुई गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ, तो बॉलिंग जो है बहुत ही बढ़िया रही है, लेकिन वाइड बहुत सारी यहां पर इस मैच में हमें देखने को मिले हैं। अंबर, उसके बाद साहिल द्वारा, और एक यहां पर वाइड का रन जुड़ता हुआ टोटल में 28 पर पहुंचा है स्कोर। इस बार आगे आकर शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन उतना यहां पर पावर नहीं था इस शॉट में। 1 ही रन, वहां पर फील्डर मौजूद था लॉन्ग ऑफ पर, जब तक फील्डर फील्ड करता 1 रन दौड़कर यहां पर कंप्लीट किया, और 29 इस 1 रन को जोड़कर हुआ है टोटल स्कोर। साहिल का ये तीसरा ओवर, और बहुत ही बढ़िया लाइन, बहुत ही बढ़िया गति के साथ डिलीवरी जो है डिलीवर करे है साहिल। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, और यहां पर अपील, पहला झटका लगता हुआ अविनाश के रूप में यहां पर, और साहिल यहां पर स्ट्राइक करते हुए, जो अच्छी गेंदे, जो अच्छी बॉलिंग यहां पर चल रही थी उसका यहां पर फल मिलता हुआ साहिल को, और पहली विकेट झोली में पड़ती हुई साहिल के 29 के स्कोर पर। छह ओवरों का खेल यहां पर समाप्त, और 6 ओवरों के बाद 29 लगे हैं बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 6ठी ओवर की आखिरी गेंद पर यह विकेट मिली थी। यहां पर कड़ा संघर्ष कर रहे थे, बॉल जो है उतनी अच्छी तरह से बैट पर आ नहीं रही है। और यहां पर एज लगी है, थर्ड मैन की दिशा में गई गेंद, पीछे फील्डर मौजूद, केवल 1 ही रन यहां मिलेगा।
सागर नए बैट्समैन जो है उतरे हैं मैदान पर। सागर सावंत का अप्रोच किस तरह से रहता है, क्योंकि शुरुआत काफी धीमी यहां पर हुई है और 30 रन लगे हैं बोर्ड पर। 7वां ओवर प्रगति पर। सागर होंगे अब स्ट्राइक पर। और सागर ने पहली गेंद पर स्ट्राइक किया और ये गेंद जो है प्रयास, हालांकि फील्डर ने बहुत ही बढ़िया किया था, प्रयास के 100 मार्क्स यहां पर देंगे उन्हें होंगे, लेकिन गेंद को बाउंड्री के अंदर रोकने में नाकामयाब। इसी के साथ साहिल जो कप्तान है पहली गेंद पर स्ट्राइक किया, कलाइयों का बहुत ही बढ़िया उपयोग और उसी के साथ स्टाइल के साथ चौके के साथ अपना खाता खोला यहां पर सागर ने। और ये सागर को बहुत ही कॉन्फिडेंस दिलाएगा शॉट, क्योंकि पहली गेंद थी, पैरों पर गेंद थी और उसका फायदा उठाकर गेंद को पहुंचाए सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए और इस चौके को जोड़कर 34 पर पहुंचा स्कोर। 7वां ओवर प्रगति पर। फिर एक बार यहां पर बढ़िया गेंद, कवर्स का खिलाड़ी जब तक फील्ड करता, 1 रन यहां पर दौड़कर कंप्लीट किया, तो सूझबूझ भरी यहां पर पारी या क्रिकेट कही जाएगी सागर द्वारा। पहली गेंद पर चौका लगा, उसके बाद हल्के हाथों से खेला, 1 रन लिया और विश्वजीत जो ओपनर बैट्समैन है, सॉरी विश्वतेज जो ओपनर बैट्समैन है, स्ट्राइक उसके पास दिया। इस बार पॉइंट की दिशा में किया, गेंद को खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, केवल 1 ही रन यहां पर मिलेगा और इस 1 रन की बदौलत 36, 1 विकेट के नुकसान पर प्रणय यहां पर बॉलिंग का जिम्मा संभाले है। दूसरा ओवर ही है प्रणय का। और फिर एक बार यहां पर थोड़ी सी मिस फील्ड कीपर द्वारा, डायरेक्ट हिट जरूर लगी है लेकिन लगता है पहुंच गया समय पर। बढ़िया गेंद थी, थोड़ी सी नीची रही थी इस बार भी गेंद, लेकिन कीपर से भी मिस हुई और उसी का फायदा उठाकर 1 रन दौड़कर यहां पर कंप्लीट किया। इस 1 रन को जोड़कर 37 हुआ है कुल स्कोर और एक यहां पर विकेट गिरी है शिरगांव क्रिकेटर्स की। इस बार वहां पर हल्के हाथों से खेला, फील्डर मौजूद, जो सिंगल वहां पर रोकने के लिए फील्डर को तैनात किया था और उसी फील्डर के पास जाते और 7वें ओवर की यहां पर समाप्ति, 7 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त हुआ। 37 लगे हैं बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। सात ओवरों का खेल यहां पर समाप्त हुआ है और 37 लगे हैं बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। लगभग 5.29 रन प्रति ओवर की रन गति से यहां पर बढ़ रही है, लेकिन 9 विकेट अभी भी हाथ में है, कभी भी एक्सलरेट कर सकते हैं, गियर अपना बदल सकते हैं, लेकिन पिच जो है बॉलर के लिए, बॉलिंग के लिए यहां पर मददगार साबित होती हुई। उल्पत शेठ नए बैट बॉलर यहां पर इंट्रोड्यूस किया है कप्तान ने, जो 3 बॉलर अब तक जिनका इस्तेमाल किया है, बहुत ही बढ़िया यहां पर तीनों ही बॉलर ने बॉलिंग किया। देखते हैं उत्पल शेठ की यहां पर बॉलिंग किस तरह से। और पहली गेंद पॉइंट की दिशा में खेली लेकिन रन नहीं मिलेगा। उल्पत शेठ नए बॉलर, सागर खुद कप्तान
है स्ट्राइक पर और एक चौका अब तक लगा चुके हैं सागर। इस बार बड़ा शॉट लेकिन पीछे फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन पर केवल एक ही रन मिलेगा और एक ही रन से संतुष्टि। बल्ला यहां पर बदलना चाहते हैं सागर। 7 ओवर का खेल समाप्त, 8वीं ओवर प्रगति पर और 38 लग चुके हैं बोर्ड पर। कप्तान सागर जुड़े हैं विश्व तेज को। उल्पत शेठ यहां पर बॉलिंग मार्क पर इंट्रोड्यूस किया है 8वीं ओवर के लिए और अब तक जो गेंदें की है उल्पत ने बढ़िया रही है। और यहां पर बहुत ही बढ़िया वर्क कीपर द्वारा ग्लव्स का, लेकिन क्रीज में ही थे बैट्समैन विश्व तेज। और यहां पर थर्ड मैन का खिलाड़ी मौजूद सर्कल में, साहिल की यहां पर अच्छी फील्डिंग, एक ही रन यहां पर मिलेगा। शुरुआत यहां पर धीमी, देखते हैं कब कितनी ओवर में अपना गियर यहां पर बदलते हैं। 39 इस एक रन को जोड़कर हुआ है कुल स्कोर। फिर एक बार डॉट गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से दूर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा यहां पर आता हुआ। तो ये वाइड का सिलसिला जो है अभी भी जारी है। सभी जो बॉलर इस्तेमाल किया कप्तान ने, बहुत सारे वाइड किए हैं। ये बढ़िया शॉट यहां पर गैप और उसी गैप में भेजा गेंद को और कप्तान सागर द्वारा ये दूसरा चौका आता हुआ कप्तान के बल्ले से। तो ये थोड़ा सा जो मोमेंटम यहां पर लो हो गया था, उस मोमेंटम को बढ़ाने की यहां पर कोशिश सागर की और दूसरा चौका बहुत ही बढ़िया यहां पर शॉट सागर द्वारा। और उसी के साथ 44 पर पहुंचा है इस चौके के बाद टीम का स्कोर। और ये अच्छा शॉट वहां पर फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन पर और एक रन यहां पर मिलेगा। चौके के बाद ये सूझबूझ भरी क्रिकेट, एक रन यहां पर लिया। उसी के साथ 8 ओवरों का ये खेल समाप्त। 45 लगे हैं बोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। और आगे का हाल अंग्रेजी में सुनाएंगे, आपके सामने होंगे सागर गोसावी। Thank you, DJ, as well as thank you, Sanket. So, 8 overs have been delivered, 45 for the loss of 1 wicket, and a plenty of batting lineup as we see as the players list. Chandrakat Gadi is still in the dugout. Kailash Gaonkar, meanwhile, it's a wide bowled by Gokul Das, another big name, good striker of the ball. Swapnil Malik, nicknamed Baba, still in the dugout. A lot of batting is yet to be witnessed. Meanwhile, a pacey delivery, again deviating from the line and length. And here we can see on the big screen, it was way outside the guideline. Wide is the signal. Now the runs moving in form of extras, couple of runs. Score moves to 47. Current run rate is 5.88. And cuts the ball to the perfection away from the third man fielder. Slight fumble. And that's a boundary. A boundary from the bat of big guy.
None other than Sagar Sawant, the captain, leading from the front. Now getting loose, knows that a score needed onto the scorecard. That boundary will boost the confidence of his partner as well. And now current run rate jumping to 6.24. 51 for the loss of 1 wicket. 9th over in progress, in fact. 8.1 deliveries so far bowled in this over. 2 wide deliveries, and the first delivery that has been bowled little short of length, but executed quite comfortably to the boundary towards the third man. Another short pitch delivery, ball kept a little lower than expected by Sagar Sawant. Could not do much adjustment. Till then the ball reached to the keeper. Meanwhile, a dot ball. So the dot balls have been most frequent in this first inning, but nevertheless, you never know when there will be shift in the gears. Good delivery, cuts the ball. There's a fielder inact at the circle at the finer, more than the point, rather than, I would say, a wider gully. Meanwhile, a single to bring his partner Vishwatej at the striking end. So far, Vishwatej looks to be very set, but could not do much of the scoring for the side. Now the captain will be hoping at least he connects in this 9th over. And as he connects, the ball goes away from the fielder of the circle. Meanwhile, the deep point is inact, throws the ball back to the keeper. Another single, taking the total to 53. 2 legal deliveries are left in this over. Let's see whether Sagar Sawant can connect. He is a devastating batsman if he gets going. Still not able to get the sixes that he's known for. And he connects, the ball racing towards the third man fielder. Now the fielder looking confident as he fields the ball. Meanwhile, a single. 1 final delivery remaining in the 9th over. So this format is very different from the normal T20 cricket, as a lot many changes and new rules as per the organizers have been introduced to make it more interesting and exciting. Swing of the bat, ball takes the leading edge, travels in the same area towards the third man. Vishwatej not gaining the confidence to hit the ball right from the middle of the bat. Nonetheless, takes a single to conclude over number 9. 5-5 for the loss of 1 wicket. DJ. So I think DJ may be having an afternoon or evening tea. Meanwhile, current run rate is 6.11. But still, so many things are remaining in this inning. And the captain has to be very shrewd as of when to apply them. So meanwhile, 10th over is about to begin. Man on strike, Vishwatej, who is looking to be very much set, has read the pitch quite comfortably. Hanging out has come as the opener, still at the crease. Now it's time for him to take the necessary risk. Let's see whether he can take those risks. Swings the bat very hard. There's a appeal. Ball goes towards the short third man. Still no connection. And this will be a sign of worry for the batting dugout. Ball onto the thigh. The height has created a doubt in umpire's mind. Both the umpires are very shrewd. Nilesh Naik right now as the main umpire. Sagar wanted to cut the ball. Looks like the catch has been dropped. The reaction says it all. We are going to check in the replay, having a very close look. Looks to be ball took inner part of the bat. Nonetheless, quicker delivery, could be well played towards the long off area. A guy patrolling the fence gathers the ball, throws it back to the bowler. So now let's see when Vishwatej is going to shift his gears. Trying his luck very hard. Ball being pitched outside the off-stump. Stretch of arms by the umpire just for a relief as wide has been declared. Score moves to 58.
So from here on, let's say the projected score is 122, but it will be much more than the projection. As plenty of cricket remaining, 10 more overs to be bowled after this over. This is a sweet connection, chance of a catch. Let's see where the fielder is going to take it. No, my dear. And even the ball crosses the fence along the carpet. So that boundary will boost the confidence of Vishwatej. Better connection to guide the ball towards the straight edge boundary. And the boundary takes the total to 62. Let's see whether some more boundaries are being hit in this over, as two legal deliveries are left in this over. A proper connection, misjudged catch, allow the ball to travel to the fence. Plays watchfully towards the covers in the vacant area. Fielder from the deep mid off, deep long off, rather gathers the ball. A single to bring captain on the striking end to face the final delivery of the 10th over. Let's see what is going to happen. Sagar Sawant, strong guy on the striking end. Connects, but slightly away from the fielder. Just a single to retain the strike in the 11th over. After completion of 10, 64 for the loss of 1 wicket. So let's see who is going to bowl the 11th over of the inning. Pranay Thari, captain of the Gajantlaxmi, bowling the 11th over, right arm over the stumps. Strong swing of the bat, but no connection whatsoever allows the ball to travel to the keeper. Reaction was certain from the captain as he's delivering the 11th over. And we are keen to watch the replay. Ball must have just missed the outer edge of the bat. Such was the reaction from the bowler as well as the keeper. Again a well cut, but a good effort from the fielder from the circle, throws the ball back to the keeper. Meanwhile, a quick single is on, score moves to 65. 11th over in progress. 65 for the loss of 1 wicket. And the projected score from here on is 126. Right now, presently, current run rate is 6.29. Good looking drive into the gap. No chance for the fielder rather than going to bring the ball out of the boundary line. Now Vishwatej, after taking couple of deliveries to read the pitch, finally getting the momentum. Good strike to the covers and the boundary takes the total to 69. But a good thing about Shirgao Cricketers is 9 wickets are intact with their team. Just a wicket down, and this wicket looks to be a paradise for batting. So meanwhile, Pranav Thari onto his run-up mark. Another good delivery. There's a cut shot in act. Slight fumble from the fielder from the point allows the captain to respond to the call that has been given by his partner. Meanwhile, a single takes the total to 70. 2 legal deliveries left in this 11th over. Sagar Sawant,
is not playing the way he is known at the moment. 20 from 16 deliveries. Came down the track, but the bounce that have been generated by Pranav makes it difficult for Sagar Sawant even to connect. Final delivery of the 11th over. Let's see what is about to come from the armory of Pranav. Good delivery continues. Throw was towards the striker's end, but Sagar Sawant rightly, timely inside the crease, concludes the 11th over with a dot ball. After 11, 70 for the loss of 1 wicket. Thank you, DJ. Meanwhile, you remain busy finding the better tracks. Till then, it's time for the golden over. And the signal has come from the main umpire, Nilesh Naik. Let's see who is going to bowl this penultimate, this mysterious golden over, as whatever runs scored in this over will be doubled. Sahil Naik, who has opened as far as bowling department is concerned, along with his partner, now delivering the final over of his individual quota, and the 12th over of the inning, golden over, is on. First delivery on to the pads. There's a appeal, chance of a run out. Throw was little late. There's a appeal again, but the batsman is quick to cover the distance. Meanwhile, a single to start the golden over in form of leg byes. 5 legal deliveries remaining in this golden over, and whatever runs that are scored in this over will be doubled at the end of the 12th over, and the total will be posted. Meanwhile, a big guy delivering at the right occasion, generating the pace, making it difficult for the batsman. Now big guy versus big guy. Sagar Sawant versus Sahil. So let's see. A challenge is on. Both the batsmen are looking to be very much set out in the middle. Umpire Ajit Shirodkar is checking at the stumps. Once the things are confirmed, the stage is set for the golden over. First delivery, a single in form of leg by. 5 legal deliveries to go. Sagar Sawant on striking end. Pull shot in act. Fielder running. 2 fielders running to stop the ball. Finally, ball wins the race, and now the runs started flowing in the golden over. This golden over will be very crucial for us Shirgao cricketers, as the current run rate is showing to be 6.62. But if some handy runs come out of this over, then definitely there will be shift in the run rate as well. It will be blooming much more than what we can witness at the present. So far 5 runs. Another wonderful strike, chance of a catch, ball hit away from the fielder. 2 will be the call, running very hard. Chance of a run out at the non-striker's end, but the diving effort from Vishwatej, and immediately umpire has signaled towards the third umpire. Requesting DJ, if you have the thumping beat, then please put it on, as the hearts are out in the mouth. Let's see what is going to be the decision from the third umpire. Meanwhile, since it is a golden over, the heart will be out in the mouth of both the teams, as well as the team management and the supporters. Is it going to be the green or the red? A question in the minds of the batting as well as fielding side. Replay is on. The third umpire checking. Let's see what is the decision by the third umpire.
hearts out in the mouth. Crucial juncture in the golden over. And the call has come to the third umpire. Everybody's eyes on the flashlights. Whether it is going to be green or it is going to be red. And now the flashlight is green. So batsman is right inside the crease. And that single brings Sagar Sawant on the striker end. This time way outside the off stump. Wide is the signal from the umpire. Even the ball was pitched outside. The ball travelled outside the playing area after having a swing. Pull shot right from the middle of the bat. Two fielders watching the ball to see that it is sailing above the head. No chance for any fielder. That is a wonderful strike from Sagar Sawant. Cross-batted shot down the ground. And watch a perfect connection from the sweetest part of the bat. The sound made it clear for this dugout of Shirgao that ball will travel the distance. Short pitch delivery, pulls the ball, but no proper connection nonetheless. Ball travels towards the fine leg for a boundary. This is proving to be very good over in favor of Shirgao cricketers. Ball manages to take the upper half of the bat. That's why a ball could not travel the distance. If it has to hit the middle of the bat, then another six was on. Meanwhile, the final delivery of the golden over. And now the acceleration have started finally in the 12th over. Sagar Sawant, the captain, being the main architect. Low full toss onto the pads, but we have heard two sounds. So definitely, wow, my dear, that was a scoring opportunity missed by Sagar Sawant as the ball was dragged. Ball was dragged onto the pads. 19 runs have come from the golden over. So 19 plus 19. Score total added to the total is 38 courtesy. Now the scoreboard is 108 after the completion of 12 overs, and the current run rate is 9 runs per over. So the current run rate immediately increased to 9 runs per over. So what a golden over this is turning out to be for Shirgao cricketers. This time down the leg side and 5 wides. So the golden over which was started is continuing in the 13th over also. 5 freebies, 5 down the leg side. So what looked out to be a great bowling performance at the start is going haywire here for Gajantlaxmi. Sagar Sawant is playing beautifully on 41, just 24 balls. Vishwatesh taken a little bit of time to score his 28. But right now, they are absolutely in commanding situation. And with 9 wickets in hand at this stage with 8 overs left, it will be totally an onslaught from another 1 or 2 overs and so. They have got the license. They have got the license to go after the bowling with just 1 wicket down. This time once again, slogged, a chance of taking a catch. Oh, what a brilliant effort.
What a brilliant effort. You just cannot blame the fielder over there. He almost ran 15 meters, 20 meters to dive, but finally in vain. Look at that effort. Stunning effort from the fielder. But still, 4 runs. Once again, another over turning out to be costly. Score moves on to 118 for 1. 13th over in progress. Once again, straight down the ground. Very good over. The start was in fact poor. Wide, 5 wides down the leg side that are just like gift freebies given to any betting side. And once you give 5 wides in the very first ball, it's an added advantage for the betting side. So again, full toss ball. What a change in pace. Didn't come out right. You just cannot blame anyone. The ball didn't come out right, but Sagar Sawant, the bat is doing the talking right now. Whether the ball has been delivered right or not, it doesn't matter to him. He is delivering that ball outside the fence for boundaries and sixes. Oh, clean ball. What a delivery. This is actually the delivery that could have got him out. Otherwise, Sagar was looking very, very dangerous. And finally, Amber comes and takes a wicket right in the block hole. No chance for him to get back onto that. But damage has been done by Sagar Sawant. 1, 2, 3 for 2 in 12.5. So 1 over still left of the 13th over. Oh, that's a lovely ball. He's happy. He's ecstatic. Why not? If we can get rid of 2 batsmen in 2 successive deliveries, and that too, Jeff Swapnil Malik. Baba just comes and goes back in the pavilion without hitting the bat in the middle of the ball. So that's how bad it is. Within a span of 2 balls, it has changed in towards Gajantlaxmi.
1, 2, 3 for 3 in 13 overs. Avesh Khan, and oh my God, his hat-trick. What is happening on this ground? 2 wickets in 2 balls for Amber Naik, and now wicket of the very first ball for Avesh Khan. So team hat-trick. Although it is not going for one particular bowler, finally hat-trick is a hat-trick. It was a full toss ball. He's coming around the wicket and absolutely plumb. Absolutely plumb. He just could not get bat onto that ball. And since it was full toss ball, so it was an easy decision for the umpire. He's out on 33. So Avesh Khan once again, this is a big appeal, but this time going down the leg side. He's an outstation player, and what a start for him. A wicket of the very first ball in his spell. And it was 1, 2, 3 for 4. Yes, it was going down the leg side. Even the bowler gave it a half-hearted appeal. One, two, three for 4, and now with single 1, 2, 4 for 4. So good start here by Avesh Khan, who is an outstation player for Gajantlaxmi. Just comes in bowls off spinners, decent off spinners here, and bowling round the wicket. So angle will be slightly different with the normal off spinners bowling from over the wicket. Started over well, but till the time Chandrakant Ghadi is there on the wicket, Shirgao cricketers will be hoping and praying for a good score. Chandrakant Ghadi is a well-known cricketer. He has been playing in leather ball cricket for over the years now, almost a few decades, and still he has kept his fitness up to the mark, and still he can get you quick runs. He can bat up the order. He can bat in the middle orders. Totally a team man. So you can see there what he's trying to do. He's trying to play with the angle. From round the wicket, he's trying to play with the angle. Sometimes the ball will come in. Sometimes the ball will go away. Good hit down the ground. Fielder is there. Stops it. Gets a single. So that will finish over number 1 from Avesh Khan after 14, 1, 2, 7 for 4. A decent start here for outstation player of Gajantlaxmi.
So batting power play. Let's see where are the fielders plays. Deep square leg, long on and long off. Third free hit has also been taken in the batting power play. This time he gets 4 runs. Ball was full and third man was inside. So once it crosses the inner ring or point region, it was a definite 4. Now they have to go give a thought about field placement. Well, if you saw carefully that third man was quite behind and he was called at the last moment and mid on was taken to long on. This is exactly where the ball had gone. So third free hit has been taken. It has given 4 runs to the batting side. Shirgao Cricketers. This time this is poor. This is absolutely poor stuff here. 5 eyes down the leg side. They have been doing it quite often now. This is easy runs, leaking runs without batsman having any trouble. That's exactly the scenario. Sometimes you try to do something extra, try to bowl quicker, and if you are not used to playing regularly, then your arm bends and strays down the leg side. Fourth free hit has been taken, so he wants to make this over count. Chandrakant Khadi has already got a boundary of a free hit in this over. Can he get one more? He can definitely score. Has he put it in the boundary? Oh, this is a stunning effort. What a dive. Previously we saw a stunning dive from the same fielder. Ulpat Sheth. And now once again he has saved 2 runs. So what could have been 4? 2 runs have been saved by Ulpat. This slightly in the air. He was trying for a run out, but good backing by the fielder. So understand that free hits cannot be taken in the golden over, but it can definitely be taken in the power play overs, and that's where the advantage is there for the batting side, where the fielders are inside, and once you cross that inner ring, more often than not you will get a boundary. This is a very good batting paradise here for all the players who are playing in this tournament. This time once again, not very well timed that he will have liked, but nevertheless a good looking shot here down the ground for the left-hander who has now come onto the wicket. Sachin. You can see the projected score is creeping fast. In spite of losing 3 wickets in 3 successive balls, a team hat-trick, still some wayward bowling is allowing Shirgao Cricketers to make a comeback. This time once again down the leg side. This is a Ghadi classic. This is as easy as you can get. And because of the batting power play restrictions, fielders also cannot be placed down on the leg side in the square leg by the captain. So bowler has to be alert. A bowler has to see that he bowls in the right channel. Once again, lucky the bowler. Otherwise, this could have been another boundary.
It just had to cross that inner ring in the short fine leg region. This is an expensive over here once again for Gajantlaxmi after completion of 15, 1, 4, 5 for 4. Once again in the air and catch dropped. But this was a free hit. Last free hit that was taken. Anyhow, catch taken or catch not taken, that would have been single. But at least some confidence would have been boosted of the fielder that I would have taken a comfortable catch. Other than that, there is nothing won and nothing lost here for Gajantlaxmi. Looks very good here. Awais Khan is into the second over. He's using the crease to good effect. Bowling around the wicket to both left-hander, right-hander. This time played in the wide long on region. Ulpat is one of the best fielders. He's very quick. And that's the reason why he's been covering the long on area. Down from the Pepsi and now towards the roadside end. .147 for 4. Still 28 balls remaining. So how much they can get? If they get somewhere around 10 runs per over, they will be inching somewhere closer to 200. This is very good piece of batting. He understands that he is not an easy bowler to go after Awais Khan. And that's the reason Chandrakant Gadi is waiting for the other bowlers, some loose balls. And he will definitely go full-blooded after the other bowlers. So far, very economical, very correct here, Awais Khan. You can see that he's mixing it well and he's good to the third umpire. So once again, oh, that was very quick work. It has to be a close decision here for the third umpire. Was it going to be a stumping or not? Well, everyone is looking here. Everyone has hopes. Hope for the batting team that I'm not out, and hope for the bowling team that batsman will be out. And all eyes on the red or the green light. Let's see what is the signal from the third umpire. This might be very close. This is an important juncture. Still looking for that light. What it is going to be, green or red? And he's out. Wonderful quick stumping. Keeper is ecstatic. Keeper is joyous. He knows that he has got rid of one more wicket. Now Gajantlaxmi will feel that we need to get the other batsman out and get back in the match.
So wickets are falling quickly. They are taking wickets, Gajantlaxmi, but some wayward bowling from the other end gives away easy runs down the leg side, easy shots, 5 wides here and there. Some catches, some misfields. If that is tightened here by Gajantlaxmi, we have seen 180, 190 is being scored while chasing. So anything is possible here. Just have to give yourself a chance. But till the time Chandrakant Ghadi is on the wicket, Shirgao cricketers will feel we can get towards that 180, 190, 200 run mark. New batsman, Kailash. Oh, appeal, a stumping chance, but the back foot was inside the crease, so it's not going to the third umpire at all. What a good comeback here from Awais Khan and Gajantlaxmi. Good stumping nevertheless. He is very quick behind the wicket, so you have to be aware as a batsman not to drag that back leg out of the popping crease. This time, what a strike! Magnificent strike. It was in the slot. Still it has to be put away, and he put it away in style. So Kailash is saying, if you are bowling well, Awais, I have come well prepared from the dugout. 6 runs to him of the second ball, and with the 6 runs, score moves on to 154 for 5 in 16. Scored 154 for 5 in 16. Quite possible to get towards that 200 run mark. Will they be the 4th team to get 200? We have already seen 3 teams going to go past 200 runs. First one was MCC, then Dragon. Chino Dragons chased it. AA Boys Bicholim. Damodar Warriors chased it. And Union Sports Club Marshall are the 3 teams that have scored 200 plus. Can we see one more team going past the 200 run mark? Amber once again getting 2 wickets of 2 balls. This time much better here. Very good piece of bowling here. Just give away 1 run and no wayward bowling. He knows that keeper is standing in front, and on top of that, short fine leg is inside the inner ring. So you just cannot bowl any loose balls or string down the leg side. This is very good. Absolutely no chance. I don't know where he was running. The ball was very close to the keeper, and if at all he had run, he could have committed a suicide. Tight leash, on a tight note, is being bowling here. Umber, after he got that wicket, he's pumped up. He knows where exactly the line and length to be bowling on the surface. This was short. This is in the air. Who is going to take this catch? Oh, catch dropped. Actually, Ulpat would have taken that catch. He was the one who got his hands, and there was some miscommunication between Ulpat and Awais Khan, and finally a chance given here to the batsman Kailash. So again, going for the full-blooded, but a stunning over here from Amber Naik. He's making a good comeback and bowled his 4th over by just giving 3 runs in that 4th over. Good spell from Amber Naik in the end, getting 2 wickets. After completion of 17 overs, the score is 157 for 5. It will be changed in commentary.
Over to Sanket Gaonkar. और यहाँ पर पॉइंट पर जो फील्डर था बहुत ही बढ़िया डाइविंग एफर्ट, और अगर थोड़ी इधर उधर होती तो बाउंड्री तक जा सकती थी गेंद, लेकिन बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग एफर्ट और रन जरूर रोके अपनी टीम के लिए। और इसी के साथ 158 लगे हैं बोर्ड पर। 18th ओवर इन प्रोग्रेस। आवेश खान है बॉलिंग मार्क पर और 2 विकेट अब तक लिए है आवेश खान ने। इस बार बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और फीदे फील्डर की गोदी में, और एक विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, छठा झटका लगता हुआ शिरगांव क्रिकेटर्स को, और 158 के स्कोर पर 6 विकेट, छठा विकेट पवेलियन में। पिछली गेंद पर कैलाश गांवकर आउट होकर वापस, और इस बार हल्के हाथों से खेला, लेकिन कवर्स में फील्डर मौजूद 30 के सर्कल पर, और उसी की वजह से यहां पर रन नहीं मिलेगा। 158 पर रुका हुआ स्कोर। 18th ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार हल्के हाथों से खेला, वहां पर गैप था, उसी गैप में भेजा गेंद को, 1 रन कंप्लीट। दूसरे रन के यहाँ पर कोशिश, और थोड़ी सी यहाँ पर मिसफील्ड। अगर ठीक समय पर बॉल को पकड़ पाते, थ्रो करते, तो एक मौका यहाँ पर जरूर बन सकता था, लेकिन उसी बीच 2 रन यहाँ पर दौड़कर कंप्लीट किए और 160 पर पहुंचा स्कोर 6 विकेटों के नुकसान के बाद। और यहाँ पर कट करना चाहते थे, लेकिन डॉट गेंद जाती हुई सीधी कीपर के दस्तानों में। आवेश खान की यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रही है बॉलिंग, 3 विकेट लेने में कामयाबी मिली है अब तक आवेश खान को। इस बार हल्के हाथों से खेला, कलाइयों का इस्तेमाल, गैप था वहां पर, इसी गैप में भेजा, लेकिन इस बार फील्डर बहुत ही चुस्ती से बॉल तक पहुंचे और दूसरे रन की जो आशंका थी इस आशंका को खत्म किया, और 1 ही रन यहां पर मिलेगा। इस 1 रन की बदौलत 161 पर पहुंचा स्कोर। तो 18 ओवरों का खेल खत्म, 161 लगी है बोर्ड पर 6 विकेटों के नुकसान के बाद। इसके बाद 12 लीगल डिलीवरीज और 161 लगा है बोर्ड पर। देखते हैं इन 12 गेंदों में कहां तक जाता है स्कोर। नए बैट्समैन विट्ठल गाड़ी,
और ये बहुत ही करारा शॉट, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद, लेकिन फील्डर बहुत जो है दर्शक बनेगा। और एक बाउंड्री यहाँ पर, वेलकम बाउंड्री 18वीं 19वीं ओवर की पहली गेंद। और पहली गेंद पर चंद्रकांत ने करारा प्रयास किया और गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर। तो इन डेथ ओवरों में इस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर चाहिए ताकि स्कोर जो है एक बड़ा स्कोर, बड़ा टोटल जो है बने और गेंदबाज जो है उन्हें बॉलिंग करने का एक मौका जो है मिले। लेकिन शुरुआत काफी अच्छी इस 19वीं ओवर की पहली गेंद पर आता हुआ चौका, और इस चौके की बदौलत 165 पर पहुंचा स्कोर 6 विकेटों के नुकसान के बाद। उल्पत ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की थी, लेकिन इस ओवर में पहली गेंद पर चौका लगने की वजह से थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर जरूर रहेगा। 11 डिलीवरी इसके बाद बाकी, और देखते हैं कहां तक पहुंचता है स्कोर। 165 ऑलरेडी लग चुका है बोर्ड पर, और उसके बाद रहेंगी 11 डिलीवरीज। देखते हैं कहां तक जाता है स्कोर। और ये यहां पर बहुत ही बढ़िया शॉट, तीर की तरह गई गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर चौके के लिए। और दूसरा चौका आता हुआ इस ओवर में, 2 यहां पर गेंदे और दोनों ही बॉल गेंदों पर बहुत ही बढ़िया प्रहार और 2 बाउंड्रीज यहां पर अर्जित करते हुए अपने टीम का टोटल जो है बढ़कर हुआ है 169 इस बाउंड्री के साथ। उल्पत पर यहां पर प्रेशर रहेगा क्योंकि 2 गेंदे और दोनों गेंदों पर बड़ा प्रहार, 2 बाउंड्री जो है यहां पर अर्जित की है। 169 लगा है बोर्ड पर 6 विकेटों के नुकसान के बाद। इस बार हवा में जरूर गेंद, लेकिन गैप में वहां पर फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन पर। जब तक फील्डर फील्ड करता, 1 रन यहां पर कंप्लीट किया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रो वहां बाउंड्री लाइन से। दूसरा रन यहां पर नहीं मिलेगा और उसकी आशंका भी यहां पर खत्म की फील्डर ने। तो बहुत ही बढ़िया फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर, जरूर 2 होते अगर थोड़ी सी यहां इधर उधर फील्डिंग में मिस्टेक होती थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया यहां पर फील्डिंग एफर्ट, और इस 1 रन के साथ 170 कुल स्कोर बना है। ऑलरेडी 9 रन आए हैं इस ओवर में, 3 गेंदें अब तक हो चुकी है। इस बार नीचे रही थोड़ी सी गेंद, एक शॉट बड़ा हिलना जरूर चाहते थे, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया उसी बीच, और 1 रन यहां पर दौड़कर कंप्लीट किया। पहली 2 गेंदों में आए थे 2 चौके, उसके बाद 2 सिंगल। तो ये ओवर जो है बहुत ही प्रोडक्टिव रही है। 19वीं ओवर, अब तक 10 रन इस ओवर में आए हैं। और ये कड़ा प्रहार, वहां पर गैप, फील्डर वहां जरूर कोशिश, पैरों के सहारे इस गेंद को रोका। लगभग इस गेंद पर चौका लिखा था, 4 रन लिखे थे, लेकिन जो एफर्ट वहां पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर का था तारीफ के काबिल। 2 रन यहां पर अपने टीम के लिए रोके। लगभग जा रही थी गेंद, ट्रेवल कर रही थी बाउंड्री की ओर, लेकिन अंत समय में इस गेंद को रोका। फुटबॉल स्किल का यहां पर बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल, 2 रन रोके अपने टीम के लिए। 173 6 विकेट के बाद। और फिर एक बार यहां पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार आई नहीं गेंद जैसा चाहते थे उस तरह से, लेकिन फिर भी यहां पर 1 रन लेने से नहीं रोक सके। और उसी के साथ 19 ओवरों का ये खेल खत्म, 174 6 विकेटों के नुकसान के बाद। डीजे 6 लीगल डिलीवरीज बाकी इस मैच की, और आवेश खान पर जिम्मेदारी है आखिरी 6 गेंदों की। पहली गेंद थर्ड में नीचे में गई, यहां पर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, अगर दौड़ते तो सिंगल जरूर मिलता, लेकिन मना किया इस बार
चंद्रकांत स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि मैक्सिमम स्कोरिंग उसी के बल्ले से अब तक आई है। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, वहां फील्डर मौजूद जरूर, सीधी फील्डर के हाथ में, वहां पर थोड़ी सी छोटा सा फंबल, दूसरा रन हम लेना चाहते हैं, लेकिन ये अगर कलेक्शन अच्छा होता तो रन आउट जरूर होता, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट, कीपर यहां पर मिस जज कर बैठे और उसी की बदौलत 2 रन यहां पर दौड़कर कंप्लीट किए। इस आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रखना चाहते हैं अपने पास चंद्रकांत, क्योंकि मैक्सिमम स्कोरिंग जो है अब तक की है चंद्रकांत ने। निजी 36 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे चंद्रकांत और आखिरी ओवर 176 लगे हैं बोर्ड पर। आखिरी 4 गेंदे इस आखिरी ओवर की 4 लीगल डिलीवरीज, जो शुरुआत काफी धीमी रही थी, लेकिन उसके बाद जो गोल्डन ओवर बहुत ही हिट में गया शिरगांव क्रिकेटर्स के। इस बार कदमों का इस्तेमाल और फील्डर वहां पर बनेगा सिर्फ दर्शक, सिर के ऊपर से जाती हुई लॉन्ग ऑन के, और एक यहां पर छक्का जुड़ता हुआ, जो स्ट्राइक यहां पर अपने पास रखना चाहते थे, तो इसी कारण के लिए, और ये करारा शॉट सीधे 6 रनों के लिए। और इस आखिरी ओवर में बहुत ही बढ़िया बैटिंग, 2 रन जो लिए थे पिछली गेंद पर, रिस्क लिया था, रन आउट होने की संभावना थी, लेकिन उसके बाद दूसरा रन लिया, कंप्लीट किया, और उसके बाद ये करारा शॉट। फिर एक बार हवा में गेंद, इस बार आई नहीं बल्ले पर, अब फील्डर वहां पर कोशिश जरूर, लेकिन थोड़ी सी आगे गिरी। फिर एक बार स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते, रन आउट होने की संभावना, और थर्ड एम्पायर को रिफर किया है, तो जरूर खतरा यहां पर, क्योंकि ये रन जो है यहां पर नहीं था, लेकिन फिर भी स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए चंद्रकांत दौड़े। देखते हैं एम्पायर। सभी की निगाह है थर्ड एम्पायर के डिसीजन पर। यहां पर एक रनआउट का फैसला जो है, निगाहें है सभी की कि कौन सी लाइट यहां पर जलेगी। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे चंद्रगांव, और यहां पर ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ पहुंच गए ठीक समय पर, और ये जो रिस्क लिया था, इस बार भी इस रिस्क में सफलता मिली है। दूसरा रन इस 2 रन के साथ 184 लगे हैं बोर्ड पर, तो आखिरी ओवर बहुत ही प्रोडक्टिव साबित होती हुई। चंद्रकांत घाड़ी 44, केवल 6 रन अपने इस अर्धशतक से दूर। देखते हैं 2 गेंदे बाकी है, और 2 गेंदों में अर्धशतक पूरा यहां पर कर पाते हैं या नहीं। अगर एक छक्का, एक बाउंड्री इस अगली गेंद में आती है, तो हाफ सेंचुरी तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं यहां पर निगाह है चंद्रकांत घाड़ी, एक बहुत ही बढ़िया पारी, जब जरूरत थी टीम को, स्कोर बहुत ही कम बना था, आक्रामक पारी। कदमों का इस्तेमाल यहां पर, फिर एक बार 2 रन लेने की जरूर कोशिश करेंगे। 1 रन का प्लेट, गैप में गई है गेंद, और जब तक वहां मिड विकेट क्षेत्र से गेंद आती, 2 रन यहां पर दौड़कर कंप्लीट, और 4 रन चाहिए चंद्रकांत घाड़ी को अपना हाफ सेंचुरी, अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। तो देखते हैं इस आखिरी ओवर, आखिरी गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं या नहीं। 186 लगा है बोर्ड पर स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान के बाद आखिरी गेंद, और चंद्रकांत घाड़ी को चाहिए 4 रन अपनी अर्धशतक के लिए। और यहां पर वाइड का इशारा, एम्पायर का डिसीजन वाइड, और ये बहुत सारे वाइड, कहीं सारे वाइड, और ऐसी बाउंड्री लगता है, अगर मैं सही हूं तो ये 4था वाइड और बाउंड्री जो है मिली है टीम को, और इस वाइड के साथ 191 पर पहुंचे। फिर एक बार मौका है यहां पर चंद्रकांत घाड़ी के लिए अपने अर्धशतक तक पहुंचने के लिए। आखिरी गेंद, रन चाहिए 4,
और ये शॉट तो अच्छा लगाया है लेकिन बाउंड्री नहीं जाएगी। एक रन यहाँ पर कंप्लीट। दूसरे रन की यहाँ पर कोशिश नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट बॉलर द्वारा और उसी का फायदा उठाकर और एक यहाँ पर 48 बेड लक। लास्ट गेंद पर चौका चाहिए था लेकिन नहीं गया और उसी के साथ यहाँ पर 20 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 193 लगे हैं बोर्ड पर और 194 रन यहाँ पर बनाने होंगे गजंत लक्ष्मी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टीम को। Thank you, DJ. So there's an announcement if anybody wants to get refreshed. The canteen is open between the dugouts. You can get the energy drink, Gatorade also available. And they recently launched another energy drink that is by the Budweiser is also available in the canteen. So you can check. That is the newly energy drink, my dear, not the actual. But the new energy drink has been launched by Budweiser and it is available in the canteen. It's a competition for Red Bull actually. That is worth to have that energy drink. And meanwhile, Gatorade and all the tables are available in the canteen. So those who are hungry, those who are thirsty, you can visit the canteen between the two dugouts. DJ, you can play the music.
online to avail G-Wave services. G-Wave is a 10 gigabyte network offering bandwidth on demand, FTTH leased lines with 24/7 online support. We undertake quality internet services to the prestigious events in Goa. G-Wave is having facility of customer care center in every taluka headquarter for the customer convenience. Also, subscribers can apply online to avail G-Wave services. So we are in to see the run chase of 194 runs by Gajantlaxmi in 20 overs. Shirgao cricketers through a magnificent batting from Sagar Sawant at the start. Vishwat Tej played a decent knock of 33, Sagar 42, and the maestro Chandrakant Ghadi scored 48 runs. Just too short of his 50, and that's the reason why they could get 193, but they were being helped by the bowlers as well and the fielders to give away many wides that turned out to be 5 wides. So that made the score 193.
But now it's all over. Now they have to chase these 194 runs. Let's see who is going to be the batsmen who are coming as openers. Amber Naik and Awais Khan. So Vittal Gadi to start the proceedings. On strike, Amber Naik, very good opening batsman. I've seen him playing quite a good innings for his side when he plays for Viper. Yes, we are ready. Umpire Nilesh Naik. So 2 men patrolling the point region and backward of point. 1 slip is in place, 1 short fine, deep third man. This time very nicely bowled. So Vittal Gadi starting off the proceedings from the roadside end. Amber nicely played, and it is not that 194 means you are going to go after the bowling right from the start. Onslaught of the very first ball. You got to see what the wicket is doing. This is not tennis ball cricket. 200 we have seen was quite chased easily in just 16 overs because this is lush green outfield, and the balls that are used in this tournament have been appreciated by everyone in this tournament so far. They have been flying. Once you time the ball and it crosses the inner ring, more often than not, you will get value for your money. And that's what we have seen so far. This is the 4th day. And I should give credit to the organizers as well. Well, you should always give credit and appreciate it when it deserves. So very nicely played. Short fine was taken into deep fine leg region. Gets off the mark. Amber, very elegant looking batsman. So we'll want to see what the surface is doing. It's not bang bang cricket right from the start. Second aspect that is going to be crucial is how they run quick in between the wickets. Running between the wickets is going to be a crucial aspect where they convert 1s into 2s, 2s into 3s. So again, very nicely played with soft hand, watching the ball till the last moment. Although it was on the legs, but he was watchful, Awais Khan. So both the openers getting off the mark with a single. .192 required in 116. So there's no point in asking run rate at the start. They just need to stay on the wicket for quite some time. Once again going for that full-blooded cover drive. Wide signal way to outside. Sometimes even in many times in cricket, even in international format, we have seen when you go for this wide delivery where actually you can get wide, you tend to edge it and give it to slips. There is no point in fiddling around when you very well know there's going to be a wide ball. Time a slight in swing and played off the bat. Appeal of some sort from the bowler. It was just in hope, hoping that the batsman will not connect off the bat. Excitement. Four without loss. Just first over in progress. Big appeal. Umpire is not interested. And even not a big appeal from the bowler himself. He knew that it was slightly high. So once it is high, it was going above the top of the stumps. The bounce is very true on of this wicket. A decent over here from Vittal comes to an end. After completion of 1, the score is 4 without loss.
So in comes Avinash Gaons. Everyone calls him W. He's the outstation player for Shirgao Cricketers. Oh, that's a good ball. Keeper could not collect. So finally, 4 byes given here by the keeper. It is going to go against the keeper's name. W is not happy because although it is not going under his name, but he knows that once you give 4 runs right at the start, it is easing pressure on the batsman. Baba, the keeper, and Baba Avinash Chandrakant Ghadi, they many a times play in one team. Very nicely bowled this time. And I was mentioning about these 3 players, W, Baba, and Chandrakant Ghadi. They play for Goa Police. Since this is a format of Panchayat municipality levels, many have spread across to different teams. W has come as an outstation player for Shirgao Cricketers, and as is Swapnil Malik. Oh, stunning ball. Absolute jeffer. With the pace that he has and that outswinger, he just mere followed that ball. No feet movement whatsoever. Good ball. That will give him a lot of confidence. So outswingers that he is getting, if he falls in the right areas with the pace that he has, that's the reason one slip has been put by the captain. This time drives beautifully. Fielder in the deep point region has absolutely no chance. You feel that there should have been better effort, but the timing was very elegant from Amba Naik. Well, you have no excuses not to dive on this ground. You can even stop diving on the swimming pool, but not on this ground. Very nicely bowled, very aptly, correctly played. Looks a compact player. Whenever I saw him on YouTube or commented when he's batting, looks very correct. Will not play some hairy shots, but sometimes while chasing, the pressure of chasing makes you do some silly things. Very nicely played this time. Very good running into the wickets. He didn't time it that well. He wanted to play it down the ground in between both these fielders, mid-off and mid-on. But still he will get a single. The good thing is that they are rotating the strike, and very decent over the second one for Gajantlaxmi. After 2, score is 13 without loss. Oh, that's a good delivery. That's a Jeffer. Beaten him all lines up, beaten his defenses. In spite of having the radar system across the boundary line, the missiles have entered into POK. That was a lovely delivery. This time onto the body line, just guiding it down the fine leg region for a single.
conscious approach here from the batsmen. It is not that they are chasing 194. That means they will just go berserk after the bowling. Free hit has been taken. So first free hit has been taken from Aviz Khan. He has just played 2 deliveries. Most of the deliveries has been faced by Amber Naik in this innings. So let's see first free hit delivery that will give them some start if he gets a boundary or a 6. Right approach here from the off-station player Aviz Khan. Once again, this time boundary. Inside edge, outside edge, doesn't matter. It was a free hit and he gets 4 runs. Leg byes. Oh, that was not a difficult keeping. Swapnil Malik is not of his own today. This also will go under keeper's name. Well, I can understand sometimes the ball keeps low, but pads are being given to keeper, so you can at least stop it by pads. Never mind. It's like Santa Claus playing on both the sides. This time once again, I was talking about Santa Claus. Here comes one more 5 wides. But good thing is that Shirgao cricketers are not are saying that whatever free gifts are giving, we are not able receiving it with closed hands. We are also with open hands and we are reciprocating it to all together. If you go to someone's marriage, you have to give him a token of love, a gift. And that gift, when your marriage turn comes, it comes return. Same thing happening here between both the sides. First it was Gajantlaxmi, now Shirgao cricketers. Oh, absolutely no position to play that shot. That should have been played on the front foot. He hit it onto the back foot and dot ball. Once again, very nicely played. This time straight into the hands of the midfielder. Will get only a single. Score moves on to 24. So that easy runs, the leg byes, the byes are once again proving to be costly. And the scoreboard is increasing at a good pace. It is going at around 8.5 at the stage. Once again, this is a very good shot. Always intended to go above the midfielder. He needs times it to perfection. So getting a good moment here, Gajantlaxmi. Amber Naik is coming of his own. He saw enough and now he has decided he is going to go after the bowling. Fantastic hitting and a great comeback here from Gajantlaxmi. 28 without loss in 3 overs.
Well, W is going to continue with his bowling, but he is not going to have the same keeper. There is a change in keeping here, and Chandrakant Ghadi must be saying, Baba, enough of you. I know you are a regular keeper, but today might not be your day, so let me do the job. Ghadi with his gloves, well, he's a regular keeper and still fit, still goes strong. Let's see whether he can save some runs behind the wicket. In comes W. Oh, half stop here from Chandrakant Ghadi. And was it an outside edge? I could not see from the here. I have to see the replay now. Yes, it was an outside edge, but I guess it was falling just in front. A difficult chance. You cannot blame him. He played with soft hand. That was the key. Once you play with soft hand, ball doesn't travel to the keeper at a much better height. That was the key while playing that shot. Gets a single. Aviz Khan. This time very nicely played. They are going for the single chance for run out. Good piece of running. The fielder in the short covers was very quick, but not quick enough like both these batsmen. Well, Gajantlaxmi and Shirgao cricketers must have seen the previous matches that have happened in this tournament, and I guess both teams or captains will not take anything lightly, as although it looks to be a great total on the board, but it might change within no time. Just like this, just lucky here. Otherwise, this could have been another boundary. This was easy shot. He just had to put bat onto that ball. He did it, but could not find a gap. 2 meters on the right or left side of the short fine leg fielder, this could have been 4 runs. Because with the pace of the bowler, you have absolutely no chance. The ball just races on. Very nicely played. This time in the gap. And it should be a single. Very decently played. They are rotating the strike. Want to make use of each and every delivery. But the important juncture is going to come at a time when are they going to take the golden over. 32 at the stage score in 3.4 overs. And it has to be decided by the dressing room and the team or the players out in the middle. Oh, cracking shot. Has he timed it well? Oh, he drops it. Man on the boundary line, but Aviz Khan says, thank you very much. This should have been a catch. And W is not happy. I guess this is almost the second time. 6 runs signaled by umpire Ajit Shirurkar. That was an elegant shot, nevertheless. He didn't get too much power behind it, but enough timing. He was close to that boundary rope, in fact. Just that you require to have practice on the boundary line to take such catches. We have seen in international format how catches are being taken in the boundary line. They take appeal here. Appeal may be thinking that there was a sound. But immediately Desmond told it was off the thigh guard. There was a definite deviation there when umpire was very much sure that it was off. And it's over. After completion of 4 overs, the score is 38 without loss.
Thank you, DJ. So it's 4 overs, 38 without loss. The match is quite decently poised, I would say. Not gone out of the hands of both the sides. And change in bowling from this end. I will hand over the mic to Sankit Gaonkar for further updates. For his wonderful voice, strong bass voice in Hindi. थैंक यू। और ये वहां पर पॉइंट पर फील्डर मौजूद, 1 रन यहां पर मिलेगा। शुरुआत तो काफी बढ़िया की है, लगभग 10 रन प्रति ओवर की रन गति से यहां पर आगे बढ़ रहे टीम गजांतलक्ष्मी। 5 ओवर प्रगति पर। और फिर एक बार उसी दिशा में वहां पर फील्डर तेज, लेकिन डायरेक्ट हिट यहां पर अपील जरूर की है। और फिर एक बार यहां पर थर्ड एम्पायर को रेफर किया गया है, निगाह रहेगी थर्ड एम्पायर के डिसीजन पर। डायरेक्ट हिट लगी थी, देखेंगे कि ये डिसीजन किसके हित में जाती है। और ये इस आसान डिसीजन था, पहुंच गए थे ग्रीन सिग्नल यहां पर मिलता हुआ। तावेश खान और अंबर यहां पर बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप दोनों के बीच चल रही है। तो खास बात यह है कि अब तक विकेट यहां पर नहीं गिरे। हालांकि पिछले ओवर में एक मौका जरूर बना था, वहां पर बाउंड्री लाइन पर कैच जरूर गई थी, लेकिन उस कैच को ड्रॉप किया। और कितना महंगा यहां पर पड़ता है इस आने वालों में ओवरों में पता चलेगा। 5वीं ओवर और 40 रन अब तक लग चुके हैं बोर्ड पर। और दूसरा यहां पर फ्री हिट लेना चाहते हैं, रन गति को यहां पर बढ़ाना चाहते हैं, प्रेशर जो है वो अपने ऊपर से हटाना यहां चाहते हैं। तो स्ट्राइक पर होंगे अंबर, देखते हैं इस फ्री हिट का कितना फायदा यहां उठाते हैं। और ये वाइड का इशारा यहां पर आता हुआ एम्पायर ने बाहें खोली और गेंद गई ऑफ स्टंप से बाहर। इसी वजह से वाइड का करार यहां पर दिया गया और ये फ्री हिट जारी रहेगा अगली गेंद तक। (41) पर पहुंचा है स्कोर। इस बार जड़ में गेंद, यहां पर कवर्स पर फील्डर मौजूद। अगर कलेक्शन अच्छा होता, डायरेक्ट हिट होती तो यहां पर जरूर खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट वहां पर फील्डर द्वारा। उसी बीच ये रन यहां पर दौड़कर कंप्लीट किया और 42 लगे हैं बोर्ड पर। जो फ्री हिट यहां पर लिया था फायदा नहीं उठा पाए। हालांकि गेंद बहुत ही बढ़िया की थी विश्व तेज ने, मौका यहां पर नहीं मिला बड़ा हिट खेलने का। इस बार बहुत ही बढ़िया यहां पर पीछे फील्डर नहीं, दौड़ जरूर लगा ही वहां पर फील्डर जो मौजूद था। 4 रन लगभग इस गेंद पर लिखे हुए थे, लेकिन जो दौड़ यहां पर लगाई डीप पॉइंट में जो फील्डर तैनात था, जब तक फील्ड यहां पर करता 2 रन यहां पर दौड़कर कंप्लीट किया और 44 से 2 रनों को जोड़कर स्कोर। इस बार गति में परिवर्तन, लेकिन दिशा से भटके वाइड जाता हुआ। और एक यहां पर आज हमने इस पूरे मैच में बहुत सारे वाइड जो है गेंदें देखी है। जो पहले बॉलिंग की थी गजांतलक्ष्मी ने, वहां भी बॉलर ने बहुत सारे वाइड, बहुत सारे एक्स्ट्रा रन दिए थे और ये सिलसिला इस इनिंग में भी जारी। विश्व तेज पटकी हुई गेंद, वहां पर फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, लेकिन थोड़ी सी उससे दूर जाती हुई और बहुत ही बड़ा यहां पर वेलकम बाउंड्री के बाहर जाता हुआ गेंद चौके के लिए। बहुत ही वेलकम बाउंड्री यहां पर और ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी आवेश खान की। 17 पर बैटिंग कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्कोर पर और उसी के साथ यहां पर 5 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। स्कोर बोर्ड पर लगे हैं 49 बिना किसी नुकसान के।
9.8 रन पर ओवर की रफ्तार से यहाँ पर गजांतलक्ष्मी जो है आगे बढ़ रही है और लगभग वही रन रेट जो है उसे चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट तो उसी हिसाब से यहाँ पर चल रही है। तो रन रेट, रन गति जो है बहुत ही बढ़िया है, जो चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और खास बात यह है कि अब तक विकेट यहाँ पर 10 के 10 हाथ में है, 49 लगे हैं बोर्ड पर। छठी ओवर सचिन गावकर पर जिम्मा दिया है, सौंपा है कप्तान ने। 5 ओवरों में 49 रन, लगभग 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से ये रन यहां पर बने हैं। अगली गेंद और इस बार यहां पर कलायु को मोड़ा और अगर फील्डर चुस्त होता तो यहां पर एक मौका जरूर बनता, लेकिन बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट अंबर और अविश द्वारा एक रन यहां पर दौड़कर कंप्लीट किया। उसी के साथ 50 रन का आंकड़ा टीम ने यहां पर पार किया इस सिंगल के साथ। अब इसके बाद 144 और रन यहां पर जोड़ने होंगे। तो ये बढ़िया पार्टनरशिप यहां पर चल रही है दोनों के बीच, आवेश खान और अंबर के बीच। सचिन की पहली गेंद पर एक रन निकालकर अब स्ट्राइक दिया अपने पार्टनर आवेश को। इस बार एज लगी है, थर्ड मैन की दिशा में गई गेंद, खेलना चाहते थे यहां पर फाइनल की दिशा में, लेकिन एज लगकर गई थर्ड मैन की दिशा में। और इसी बीच एक रन यहां पर दौड़कर कंप्लीट किया, वहां पर तैनात था फील्डर बाउंड्री लाइन पर थर्ड मैन का, जब तक फील्डर फील्ड करता एक रन यहां पर दौड़कर कंप्लीट किया और 51 इस रन को जोड़कर हुआ है स्कोर। छठी ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, वहां पर गैप बना है, उस गैप में डाला गेंद को और जब तक कि लॉन्ग ऑन का फील्डर उस गेंद को फील्ड करता 2 रन यहां पर आसानी से कंप्लीट किए। तो बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर दोनों ही बैट्समैन द्वारा। इस ओवर में हालांकि बाउंड्री नहीं आई, लेकिन 1-1, 2-2 करके यहां पर रन जो है दोनों ही बैट्समैन जोड़ रहे हैं। यहाँ फिर एक बार पॉइंट की दिशा में गाइड किया गेंद को, लेकिन वहां पर हालांकि फील्डर मौजूद, रन यहां पर नहीं मिलेगा। डॉट गेंद। इस ओवर में सचिन ने अब तक बॉलिंग बढ़िया की है, अब तक बाउंड्री इस ओवर में कंसीड करने में कामयाबी नहीं मिली है दोनों ही बैट्समैनों को। इस बार हल्के हाथों से खेला, कलाइया मोड़ी और फील्डर हालांकि मौजूद मिड विकेट क्षेत्र से, जब तक फील्डर फील्ड करता एक रन यहां पर दौड़कर कंप्लीट किया और 54 इस रन को जोड़कर हुआ है कुल स्कोर। और छोड़ी है गेंद, लेकिन ये बहुत बढ़िया गेंद, थोड़ी सी यहाँ पर गति दी थी गेंद को और उसी के साथ 6 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ 54 लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। डीजे थैंक यू डीजे। और 7वीं ओवर की पहली गेंद पर यहां पर तीसरा फ्री हिट लेना चाहते हैं अंपर। तो पिछली ओवर बहुत ही बढ़िया रही सचिन की, केवल 5 ही रन आए और अब रिक्वायर रन रेट जो है 10 पर पहुंच गई है। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर नहीं और उसी का फायदा उठाया और गेंद को भेजा पॉइंट की दिशा में।
4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो फ्री हिट दिया था उस फ्री हिट का यहाँ पर पूरा फायदा उठाया और 4 रन इस गेंद पर अर्जित किए। तो 7वीं ओवर की ये पहली गेंद पर बहुत ही करारा प्रहार और चौका अर्जित किया इस गेंद पर 58 उस चौके को मिलाकर वो है स्कोर। तो लगभग रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट जो है 9.41 दोनों ही लगभग समान। विश्व तेज 7वीं ओवर और पहली गेंद पर खाया है चौका। इस बार यहां पर फिर एक बार वाइड और ये भी गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। तो 5 रन यहां पर एक्स्ट्रा मिलते हुए। तो जिस तरह से गजांतलक्ष्मी ने ऐसे रन बहुत सारे दिए थे और वहीं इस इनिंग में भी वही साबित होता हुआ उसी तरह से रन जो है यहां पर मिलते हुए। तो एक्स्ट्रास बहुत सारे इस पूरे मैच में हमें देखने को मिले हैं। वाइड जरूर गेंदी गई और वाइड गेंदी जो है वो बाउंड्री के बाहर भी बहुत सारी जाती हुई देखा है। तो इस वाइड और चौके को मिलाकर 63 पर पहुंचा है स्कोर बिना किसी नुकसान के। इस बार यहां पर करारा शॉट खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, लेकिन चूंकि एक डॉट गेंद यहां पर, पिछली गेंद जरूर वाइड रही लेकिन इस बार बहुत ही बढ़िया कमबैक विश्व तेज द्वारा। पिछली ओवर हालांकि काफी बढ़िया रही थी, सचिन की केवल 5 रन आए थे, लेकिन इस ओवर की शुरुआत जो है खराब हुई है विश्व तेज की। इस बार यहां पर झड़ में गेंद थी लेकिन उतना ही अच्छा शॉट और वहां पर गैप और गैप में जाती हुई थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में से ये गेंद गई और ये इस ओवर का दूसरा चौका एक वाइड के रूप में मिला था। और ये बहुत ही बढ़िया फुल टॉस हालांकि गेंद थी, डीप हो रही थी और बहुत ही करारा शॉट ये और एक चौका जुड़ता हुआ और इस चौके को मिलाकर 67 बना है स्कोर बिना किसी नुकसान के। विश्व तेज की ये ओवर जो है काफी महंगी साबित हो रही है। बहुत सारे रन जो है इस ओवर में अब तक आए हैं, 9 रन कुल आए हैं अब तक इस ओवर में। और फिर एक बार यहां पर करारा शॉट लेकिन पॉइंट का फील्डर जब तक इस गेंद को फील्ड करता 1 रन यहां पर दौड़कर कंप्लीट किया और उसी के साथ 68 पर पहुंचा है टीम का कुल स्कोर। ये पार्टनरशिप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर साबित होती हुई। अगर इस मैच को जीतना है तो इसी तरह की पार्टनरशिप, इसी तरह की बैटिंग की यहां पर जरूरत है। सूझबूझ भरी पारी दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट कवर्स की दिशा में लेकिन पीछे फील्डर मौजूद, जब तक कि फील्डर फील्ड करता 1 रन यहां पर दौड़कर कंप्लीट किया और इस 1 रन को जोड़कर 69 पर पहुंचा स्कोर। इस ओवर जो है ये ओवर लगभग अब तक 11 रन आए हैं। फिर एक बार करारा शॉट कवर्स की दिशा में, इस बार फील्डर से दूर और तीसरा चौका आता हुआ इस ओवर में। बहुत ही प्रोडक्टिव ओवर, बहुत ही महंगी रही है विश्व तेज की ओवर और इस चौके के मिलाकर 73 और 7 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त होता है। 7 ओवरों के बाद 73 लगा है बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। सचिन को फिर एक बार यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है बॉलिंग में। दूसरी ओवर सचिन की और यहां पर बहुत ही बढ़िया गेंद, थोड़ी सी फिसले वहां पर बैट्समैन आवेश खान, लेकिन इन वक्त पर अपने आप को संभाला और सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंचे। तो कोई खतरा नहीं वहां पर। रन हालांकि लेना चाहते थे, 2-3 स्टेप आगे बढ़े थे, फिसले, लेकिन अपने आप को मैनेज किया अंत समय में।
और इस बार करारा शॉट, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद और ये पहला झटका यहां पर लगता हुआ। बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप चल रही थी, इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सचिन ने का यहां पर सचिन को साथ मिला और सचिन का यहां पर सचिन ने पहला झटका दिया 73 के स्कोर पर। पिछली गेंद पर सचिन को कामयाबी मिली। आवेश खान जो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में दिख रहे थे, बहुत ही बढ़िया टच में दिख रहे थे, उसे वापस यहां पर भेजने में कामयाबी मिली है सचिन को। और वेद भामरे नए बैट्समैन उतरे हैं मैदान पर। और पहली गेंद पर बहुत ही करारा शॉट, वहां पर गैप और फुटबॉल स्किल का फिर एक बार यहां पर बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल। 2 रन यहां पर अपने टीम के लिए बचाए। जो लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी था दौड़कर इस गेंद को रोका और जब तक इस गेंद को रोकते 2 रन यहां पर दौड़कर कंप्लीट किया और 75 से 2 रनों को जोड़कर यहां पर कुल स्कोर। तो सचिन की यहां पर तारीफ जितनी की जाए कम, क्योंकि 73 रनों की बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप दोनों के बीच हो रही थी। उस पार्टनरशिप को ब्रेक करने में यहां कामयाबी मिली है सचिन को। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, वहां पर डीप पॉइंट मौजूद और सीधी उस खिलाड़ी के पास जाती हुई और बहुत ही बढ़िया थ्रो, एक ही रन ही मिलेगा। सचिन की ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बढ़िया अब तक बॉलिंग रही है। तो इसी तरह से अगर विकेट यहां पर लेने में कामयाबी मिलती है बॉलरों को तो गजांतलक्ष्मी जो है यहां पर मुश्किल में आ सकती है। नहीं तो बहुत ही हेल्दी रन रेट के साथ इस रन चेस को यहां पर रन का पीछा कर रही है गजांतलक्ष्मी। वेद यहां पर पहली गेंद और ये भी गेंद जाएगी सीमा रेखे के बाहर, चौके के लिए वाइड का इशारा आता हुआ लेग स्टंप से दूर जाती हुई गेंद। तो इस मैच में बहुत सारे तोहफे जो है एक दूसरे को दिए हैं, वाइड गेंदे और उसी के साथ चौका। तो बहुत बार इस मैच में ये घटनाएं जो है हमें देखने को मिली है और उसी के साथ 81 पर पहुंचा है इस वाइड और चौकी के बदौलत। सचिन की अब तक बहुत बढ़िया बॉलिंग तारीफ हो रही थी, लेकिन पिछली गेंद पर थोड़ी सी दिशा से भटके और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा बाउंड्री के साथ। यहां पर हवा में गेंद और सीधी हाथ में जाती हुई, अंबर यहां पर कुछ खास नहीं कर सके और वेद यहां पर कुछ खास नहीं कर सके, बिना अपना खाता खोले वापस और डबल स्ट्राइक किया है यहां पर सचिन ने। पिछली विकेट आवेश खान की और इस बार यहां पर भेजा वापस वेद को। तो 2 विकेट इस ओवर में, स्कोर पहुंचा है 81। डीजे
सचिन की यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि डबल झटका यहाँ पर इसी ओवर में। पहले आवेश खान को वापस भेजा, उसके बाद वेद भामरे को भी आप वापस भेजा। बिना कुछ किए वेद भामरे वापस अपने डगआउट में। उल्पत शेठ नया बैट्समैन उतरा है क्रीज पर, और यहाँ पर जिस तरह से पहले विकेट की पार्टनरशिप बनी थी, अब इन दोनों खिलाड़ियों को जो मैदान पर मौजूद उन्हें ये पार्टनरशिप जो है यहाँ पर बनानी होगी ताकि उस टोटल तक पहुंच सके। बहुत ही बढ़िया हेल्दी रन रेट के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दो झटके जो लगे हैं उसका परिणाम कितना होता है आने वाले ओवरों में पता चलेगा। और यहाँ पर तीसरी विकेट, तीसरा झटका, और एक ही ओवर में क्लीन बोल्ड यहाँ पर तीसरा झटका दिया है सचिन ने। तो यहां पर देखते हैं रिप्ले में, पैड को जाकर लगी गेंद और पैड को लगने के बाद सीधी जाकर टकराई विकेटों को, और उसी के साथ इस ओवर में ये तीसरा झटका सचिन ने बखूबी। ये ओवर जो सचिन की बहुत ही किफायती, बहुत ही बढ़िया, 3 विकेट एक ही ओवर में, और जो प्रेशर यहां पर था उस प्रेशर को वापस किया गजांतलक्ष्मी के बैट्समैनों के ऊपर। और इसी के साथ 8 ओवर का ये खेल समाप्त 8 ओवर के बाद 81 लगे हैं बोर्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर। और आगे का हाल सुनाने के लिए आपके सामने होंगे अंग्रेजी कमेंटेटर सागर गोसावी। So that was a wonderful over bowled by Sachin. Actually, he has dropped a catch initially. And Kailash now to delivers a wide delivery. Equally well kept by Chandrakant Gadi behind the stumps. Taking the blow onto his hand, but he's a wall behind the stumps. Meanwhile, Sachin, who was the culprit when the catch was dropped, now coming and taking 3 wickets. So the captain will be very happy with the effort. Another short pitch delivery, very well played by Amber to take a single. And that single brings his partner, who is just arrived at the middle, is on the striking end. Ulpat is back to the pavilion. Dilesh Fatte with jersey number 3 on his back. And what a good over bowled by Sachin. Has taken 3 wickets. Have conceded 8 runs, but nonetheless, he has taken 3 important wickets. And now the body language of the fielding side have definitely changed. Short pitch delivery bowled by Kailash, but see the wicket keeper standing right near the stumps. And what a lovely collection. The most experienced wicket keeper in this tournament so far, doing keeping behind the stumps. Another wonderful drive to open the account for Dilesh Fatte. So that single takes the total to 84. And meanwhile, now Amber senses that nothing has come so far at the halfway of this over. So immediately decides to take a free hit. This is the 4th free hit of the quota. Let's see whether Amber can take maximum out of it, playing at the individual score of 37. Amber on the striking end, and the run rate is now exactly 10 runs. Required run rate is 9.57. Change in pace, ball takes the inside edge. Definitely there was a sound.
But a change in pace works for Kailash. Kailash is also a very disciplined bowler, a hard-hitting batsman and a disciplined bowler having a very strong shoulder. He can generate the pace with a very short run-up. Lovely pull shot in act, horizontal bat shot straight down the ground towards the long on area. A single is on, settles for a single. Score moves to 85. Final delivery about to be delivered of this 9th over. A lot many things are happening out in the middle. Good pitch delivery, ball takes the inside edge, travels toward his short fine leg. A football skills displayed by the fielder inside the circle to stop the ball from crossing the inside circle. Meanwhile, that's a conclusion of 9th over. Score moves to 86 for the loss of 3 wickets. More 108 runs required at the run rate of 9.82. DJ. So meanwhile, DJ enjoying his evening tea. So let's tune in. And the same bowler has been given the responsibility to bowl the 10th over of the inning on a hat-trick. Sachin on a hat-trick. Let's see whether he can take the hat-trick. In fact, the first hat-trick of this tournament. Lot of expectations by the captain from Sachin. Right arm over the stumps. Cuts the ball to the point and the hat-trick has been declined. Meanwhile, Sachin, a good bowler, starts with a dot ball in the second over of his own quota. Meanwhile, there is a chance of a catch and the big hands of Swapnil Malik won't miss it. Wicket goes down, wicket number 4. Back to the pavilion. DJ, if you have arrived. Thank you, DJ. The marriage season will be arrived soon. That's why the DJ is playing this music so that people get ready to dance on the tune. Meanwhile, let's see. 4th wicket back to the pavilion and all the 4 wickets are taken by the bowler who is bowling at this moment. Meanwhile, pulls the ball, Amber, the set batsman, guides the ball towards the square leg to take a single. And that single will bring new batsman who is recently joined out in the middle on the striking end. So new man in is Pranav. Pranay plays watchfully. 87 on the board and what was a climbing run rate has been brought down to 9. Now the required run rate is 10.35 courtesy
A very good bowling and striking at the regular interval, Sachin. Again, plays the ball towards the mid wicket. Now see the body language and the efforts of the fielders as 4 wickets are back to the pavilion. Certainly boosted the morals of the fielding side, definitely. The dugout which was enjoying in the beginning half of the inning now looks to be little silent of Gajantlaxmi, but nevertheless, cricket is a game of uncertainties. Anything and everything is possible. Fall of wickets, no problem, but a setback always brings the comeback. Again on to the legs. Pranay was not able to play it properly. He has hurt himself. Hope the injuries are not costed much. Meanwhile, that concludes over number 10. Half of the inning has been concluded. Score is 87 for the loss of 4 wickets. DJ. So now Kailash to continue the 11th over. And that's the signal from the umpire. But wait, yes, it is. Last free hit of the quota taken by Amber. Knows that boundaries have been dried up. Score is not come in the last couple of 2 overs. Want to accelerate now. There's a proper connection between the 2 fielders and what a hit. Glorious strike to watch from out of the boundary rope. Lovely cricketing shot to dispatch the ball between the 2 fielders. That is long on and long off. And that is a better connection. Finally, the scoreboard moving by a boundary. Total moves to 91. Amber playing at the score of 43. Let's see whether he can make it to half century. Kailash, a strong guy. Balls. Oh my dear, a change in pace, little casual effort from Amber and the wicket. Back to the pavilion, Kailash strikes courtesy, a change in pace. Rolls his finger at the very last moment. Amber caught very much plumb inside the 3 stumps in the danger zone and that's out. DJ. So now 5th wicket back to the pavilion at the score of 91 and a set batsman has been sent back by Kailash. Newman in is Rutvik Wolwaker. Let's see what Rutvik can do as he is at the striker's end. Kailash, the big guy with the ball. Another good delivery, maintaining the line and length, wicket to wicket. That is the trick done by Kailash. A very good over about to be considered. Let's see what are going to come next. Mixing up his deliveries to create a mind, to create a doubt. Good strike towards the point areas. A dive, but could not stop the ball from crossing the circle. And that allows both the batsmen to take a single. That single takes the total to 92. Now the run rate is dropped furthermore to 8.63 runs per over. And required run rate has jumped to 10.93. Again,
A good drive towards the covers. Fielder from the long off runs in quickly to gather the ball, throws it back to the keeper. And that single again takes the total to 93. Final delivery of the 11th over. A deft touch, wanted to guide the ball towards the fine leg area, not getting the proper connection as well as the gap. So that concludes over number 11. Score is 93 for the loss of 5 wickets. So now this is going to be the golden over, and none other than Avinash Gavas has been given the responsibility of this golden over, as two new batsmen are out in the middle, courtesy a good bowling by Sachin, who has taken 4 wickets, and now Kailash taking the 5th wicket. Avinash Gavas all set, man on strike, Pranay. Pacey delivery down the leg stump. Stretch of arms by the umpire. So first delivery has been bowled as an extra, and a run awarded in favor of the batting team. More 100 runs required. Let's see which of the batsmen is going to take the responsibility of that run chase. Meanwhile, Avinash Gavas right arm over the stumps. Bowls a delivery that ball cap little low, slightly outside the off stump. Correction in the line, correction in the length, and ball travels safely to none other than Chandrakant Ghadi. So dot ball to start with the proceeding now after delivering a wide. Gradually on to his run-up mark, thinking of what to deliver as golden over is on. Oh my dear, look at that delivery. Ball deviating, maybe pitched into the crack, going away from the batsman as if it was a leg cutter delivered. Ball deviating straight in the hands of keeper. Consecutive dot balls bowled by a young sensational Avinash Gavas. Oh, and that ball has taken the bails on its way. Wicket intact, but the bails goes for a troll. What a wicket, what a strike by Avinash Gavas. 6th wicket back to the pavilion in the golden over.
So, up goes a golden over in favor of Shirgao cricketers. Gajantlaxmi, wickets are falling like pack of cards. 6th wicket back to the pavilion. In fact, down the leg stump, pacey delivery again a wide. Well kept by Chandrakant Gadi, standing like a wall, not allowing the ball to cross it. Even if the ball about to cross, then definitely he is cutting the pace of the ball so that the ball doesn't cross the fence. A very experienced campaigner of Shirgao cricketers behind the stumps. Another good delivery. Oh my dear, I can't believe my eyes. Batsmen have missed the ball. The ball on his way, slightly missing the leg stump. Otherwise, one more wicket would have been back to the pavilion. The height that made the ball travel above the stumps. Even it was a surprise for Chandrakant Gadi. We can see the look on his face and that staring eyes, watching how come the ball has missed the stumps. Meanwhile, two legal deliveries are yet to be bowled in this golden over. So far, only 2 runs have been given, that too in form of extras, 2 wides to concede 2 runs. 12th over in progress, gold over in progress. 4 legal deliveries are already delivered. Oh my dear, there's a appeal, and Avinash Gawa strikes for the 2nd time in this golden over. 7th wicket back to the pavilion, and now it looks like just the formalities remaining at the crease. Ball takes the outer edge of the bat, travels safely to the keeper, and DJ, you have to do a lot of work now. It's time for you. And now that is the Jugalbandi that is happening as Gadi, the instructor behind the stumps, and his fellow mate Avinash Gavas are delivering. Meanwhile, some light moments and enjoyable moments for officials. DJ, carry on with the music. Thank you, DJ. New man in is Sahil Naik. Looks to be a strong guy as per the posture and the stretcher. Let's see what he can do now. Avinash Gavas. Change in pace, but again, down the leg stump. This is what I would like to say is when you are delivering the wrong ones, the slow ones, you have to be pitching them in the right areas. An inch here and there, then ball might disappear out of the ground. So that's why you have to practice them a lot, and you have to deliver in the right zone. Meanwhile, Avinash giving only 3 runs in form of wides. Again a good delivery, slightly missing the edge of the bat, and what a lovely over concluded by Avinash Gavas, that too into the golden over. Only 3 runs, and Viraj is busy calculating the stats. Score is 99, courtesy of very good bowling display by Avinash Gavas. Just 3 wickets needed for Shirgao cricketers to register themselves in the 2nd round, and these 3 runs have come from extras, courtesy 3 wides. So over to Sanket. Sanket, please come. Enjoying some moments in the commentary box. Sanjay, Mr. Sanket forgot. So 99 for 7. This is in the air. Will it be taken? Oh, should have been taken. He was all the while in the position on one knee.
Well, nothing is happening at this stage. At one point, it looked as if they will make a match of this. But once the first 2 wickets had gone down, they fell like pack of cards. Without any fight, nothing. And looking at the way they are batting at this stage, things might look very scary for them. They might be bowled out before the 20 overs. Once again, slower ball straight to the hands of the short mid-wicket region fielder. So too many dot balls being flowing, asking run rate is creeping up each and every ball. It is now 12.40 and the current run rate is coming drastically down after dot balls being played consecutively. Once again, in no position to play that pull shot. Mixing it well here, Kailash bowling those quickers, suddenly bowling those back of the hand slower ball leg spinners. Another over comes to an end without going for too many runs. After 13 overs, it's 103 for 7. So batting power play has been taken here. Fielders are coming inside. Shirgao cricketers very well know that the match is well within the grasp, but not because of the scoring rate, but because of the wickets that have fallen. 7 wickets is too much when asking run rate is somewhere around 12.5 to 13. Oh, that's it. That's it. 5 wickets for Sachin. I guess it's the first time in this tournament someone has taken 5 wickets. Well, Sachin, this is a fantastic bowling. He's bowling those leg cutters and there are quick leg cutters. Batsmen are in no position and they are clueless about his bowling. Well, Sachin, please take the ball in your hands. Sachin, please take the ball in your hands and show it on the screen. Show it for the YouTube viewers. Please show it. Yes, yes. 5 wicket hauls doesn't come easily. He's very happy. You can see that. You can see all the 32 teeth. Oh, that was close. That was very close. The bat came finally on time. But if you see carefully, there is number 7 on his jersey. And there are still 2 wickets left. So can he take 2 more wickets and equal the number on his jersey? Oh, that was close. That was mighty close. Gadi is appealing for the third umpire. The back leg didn't move at all. The back leg is gone for the third umpire. Let's wait and watch. Sachin will be hoping that, yes, somehow some magic will be created and I get the 6th one. We have got Awais Khan here in the commentary box and also looking at his scores because he has to take something in Mumbai to tell his friends that yes, I scored good runs and I also got many wickets.
Still waiting for the third umpire. Awais Khan looks a very good prospect, just 16 or 17 years of age, playing for Gajantlaxmi, and many would have watched him playing in this tournament, and there's a green light flashed by Tushar Karmarkar. Once again, this time the back foot was well inside. Umpire was very much convinced that it was not out. Well, the batsman who is playing right now is with his number 5 jersey. So he is telling Sachin, I will keep you on 5 wickets only. Just guess who is winning, batsman or the bowler? This is in the air, but very nicely played. Up and over the covers region fielder. Should get a boundary. And batsman says, yes, I'm still not giving you that wicket that you are waiting to get. Just wide outside, full length ball, and beautifully played over covers region fielder. 1 ball remaining in his over. So last ball for Sachin. Can he finish off with a wicket? What a spell. Stunning spell here from this bowler of Shirgao. So finally his over comes to an end, and also the spell after completion of 14 is 108 for 8, and Sachin finishes off his spell with 5 for 19. Finally we have seen a 5-for in Sanguem Cricketers 21st edition. We have seen a century and now a 5-for. $109 for 8 in 14.1 overs, 85 to get in 35 balls. Oh, that's it, clean bowl. 9th wicket going down, and Vittal has come on back into the attack and getting a wicket for himself. So what could have been an interesting match, what could have been a tight match is turning out to be one-sided in the end. Oh, that was very close.
This might finish anytime soon. Suddenly, it was a collapse where everyone was glued, everyone was interesting at one point of time, but suddenly when one fell, it was a disarray for the betting side. Very nicely played. Beautiful shot, in fact. He waited onto that and he knew that there was a gap between short third man and point region fielder, and he bisected it to perfection. Once again, he wanted to bisect in between both these fielders. Well, he must have been attending maths classes regularly because his bisection is perfect. He finds the gap. Can he find it one more time? It will be some joy for him. That first shot was a beautiful one. Now the third man has been taken deep. This time he went for the full-blooded cover drive, didn't get anything. Vittal finally gets a wicket in this over. Lots of crowd here in the Pepsi stand, towards the Pepsi stand, watching this match closely. After 15 overs, it's 1-1-0 for 9. Just small moments left in this match. In fact, 14 overs. 114, beg your pardon. 114 in 15 overs. Well, many spectators. It's an outside edge. Many spectators are sitting across the Pepsi stand and sitting very, very positioned in the balcony. What a way to sit over there. This is the perfect place, straight on at the long on region where you get a wonderful feel and ground. And this is a wonderful shot. This is the second time he has played a good shot. One was in the backward of point region, this time over the wide long off and covers region. So second boundary for him, something to cheer for the batsman. Sahil Tari. Oh, this is a big shot. Is it going for 6 runs? Wow, what a shot. What a shot. This is a beautiful shot. I guess this is one of the best shots we have seen of the day. Almost closer. This reminded me of MS Dhoni. This is a helicopter shot. Well, Hardik Pandya also tried many a times. He doesn't get it right, but Sahil got it right, bang on. Jersey number 7. This is the power of jersey number 7. Can we see a few more shots from number 7 jersey? Well, who doesn't remember number 7 jersey is the most famous in cricket and is the most famous in football as well. This time once again he goes for the straight hit. Timing it well. Is it going for 4 runs? They go for the second. Slight fumble. And everyone's here suddenly wants to see more of Sahil Tari. The way he has hit, he is giving some joy for the spectators. Who doesn't like to see a few more boundaries and sixes? Entertainment here for everyone. Very nicely played once again. I guess the way he's playing, he's not playing as a bowler. He's playing like a regular batsman. He should have been up the order.
But finally, he can show to his teammates and managing committee, yes, I can bet. And next time, please get me ahead. After 16 overs, score is 1-2-3 for 9. Sorry, 1-2-7 for 9. This time this could have been another 5 wides. But Chandrakant Gadi saves the day for the bowler. So it will be 1 wide and 1 of the byes. 129. Once again, Sahil Tari. This was a change of pace. He got that below in the top gear. Suddenly he has to shift the gear to normal one, the neutral one. He loaded the gun, finally backed off. This time once again, he knows the bowler that he's loading his gun, he's loading his bat. So let me not give it in his slot. Let me not bowl a quicker one. This time once again, slower ball, appeal from the keeper, appeal from the bowler. It was more sort of asking and pleading the umpire, yes, please finish this off and we want to have early tea. Umpire says, yes, I had already had tea in my half time. Please concentrate your match. I am there to adjudicate. Once again, this was quicker one. He is not, he is playing with Sahil here. He is playing with the mind of Sahil Tari. Sometimes slower balls, sometimes quicker ones, so he is not guessing him right. This time it's an outside edge, but third man has been kept basically for the same reason, that if there is an outside edge, then there is a chance of saving that boundary. That was a quicker one. Sahil had no clue, but just played down the third man region. This time played with soft hands. Can they go for the second run? There is a big gap, wide gap in the square leg region. The fielder was in the mid wicket and the fielder from short fine leg region had to cover that long area. Finally 2 runs means 17 over completed and Sahil Tari will be on strike. 132 for the loss of 9. Finally, W has come onto the wicket and said that if you cannot finish it, let me finish it. And let me finish it off now by getting rid of Sahil Tari. But Sahil is telling that I can get a few more boundaries against your name as well. Sahil is playing on 19 as per Viraj Tendulkar. Very nicely played in the backward of point region. So he's watching the ball. That is a good sign. And his feet are also moving nicely. So anyone from Gajantlaxmi, all are watching the match, all are cricket lovers, and they very well know who performs, who doesn't perform. Must have analyzed this match, which will help them in the next tournament. It's cut him into 2 half. Cut him into half. Bowled at coming the incomer. Sahil has absolutely no answer.
Once again, a single in the third man region. Asking run rate is way too high, 61 runs in 15 balls. He is trying everything to get rid of the last man, but he is unable to do so. Can W finish it off, or can they play the 20 overs is going to be the question. Still they are not getting that wicket. They are making life difficult for the bowlers of Shirgao Cricketers. Still 60 run required in 13 balls. So if at all, if you less the number of byes and wides or misfeeds that were given by Gajantlaxmi, that's it. Finally, the slower ball got rid of Sahil. Sahil was ready to load the gun for that six. The ball came much slower than he anticipated, and all over for Gajantlaxmi. Swung it, but finally uprooting his off stump. So lots of positive here for Shirgao Cricketers and lots of scope for improvement in these quarterfinals. And Gajantlaxmi, yes, some small ray of hope with the positivity of batting of Amba Naik. Good hand from Abiz Khan. But finally, 3-4 wickets fell in quick succession. Finally, it was number 10, Sahil Tari, that gave some joy for everyone to have a good smile. But Shirgao Cricketers are going to enter into the quarterfinals, and it is bye from my side. Over to the presentation ceremony with Sagar Gosavi. So now it's about to be at the presentation area, and the guest for the presentation area is the proprietor of Dhani Motor Corp, Samir Gaukar here will be joining us at the presentation area to give away the Man of the Match trophy. So now we are at the presentation area, requesting first the captain of
Gajantlaxmi, kindly join me at the presentation area near the pavilion. So requesting captain of Gajantlaxmi to kindly come here and have a chat. So we are into the final part of today's day. The final match of the first round has been played between Shirgao Cricketers versus Gajantlaxmi. And in that, Shirgao Cricketers have become the winners, courtesy a good batting bowling display. So first of all, here we have the captain of Gajantlaxmi. So you are playing for the first time in this tournament. Lot many things to be taken care of. So what was your feeling when all the rules were told? This is not a normal T20. Different rules, different set of things. So how difficult it was to carry on with the match? It was not difficult, but overall it was a good experience. And we have to improve our fielding and as well as bowling as well. So what do you think? What about these 5 free hits? What about the golden over where runs get doubled? What is your thought on that, about this implementation of new exciting rules to make it happen more exciting? Yeah, it was overall a very good experience as well as new thing in Goa. And I have not seen anything like this before. So basically it was our first tournament here. And we would like to play many more tournaments such as this. Okay, Captain, anyways, hard luck for you all, but you have to improve in a certain area, so you will take the positive from there. Now requesting the captain of the winning side, Sagar Sawant, the big guy, captain of Shirgao Cricketers. So a smiling face as usual. The opener who has opened the inning has done a little bit partnership, but now finally a good display by the other players. Sagar, what is your thought about the match? Actually, in the first Powerplay, we were going very slow with the bat. But when the golden over, which was introduced first time in this tournament, I think it was given a batsman a boost, and we able to score the 191 with a loss of some 7 wickets and all. So it was good a tournament to bat here, and good wicket to bat on. So, but I was close to the screen, so I have seen the good bowling that was displayed by the opponent team Gajantlaxmi initially in the inning, and I've seen a hint of outer swing, in swing, so that was creating a mind in your actually while batting. But nonetheless, so what you have to say about your bowling? I think in the first power play, I would say we were given some extra runs by the bowlers. So wide balls and leg byes in also in the byes. So Sachin bowled very well, and also the Avinash who picked up back-to-back wickets. So it was the turning point. I would say the 3 wickets in the match from Sachin, which make us this game to win this match. But as the catch was dropped, definitely the mood was shifted from a joyful mood to little stare. But finally, Sachin came and delivered. So congratulations, Captain. See you in the next round of the tournament. Thank you for joining me in the presentation. Now, requesting the guest for today at the presentation area, Samir Gaonkar, the proprietor of Dhani Motor Crop. So kindly come as we are about to award the man of the match. Before awarding the man of the match, I would request Samir Gaonkar to kindly hand over the match ball to the bowler who has taken 5 wickets. That is his right to grab the ball from the hands of our guest. Requesting Sachin to kindly come and collect the ball. Please, as you are the top performer in this match, you have picked up 5 wickets to actually break the backbone of the opponent team, and good reply from you as you have dropped the catch, but still you brought the team back into the game. You have taken the wicket of that outstation player whom you have dropped. Nonetheless, good effort, and first collect the match ball from the guest. So let the bowling figures come to the camera as the bowling figures are written.
on the ball. And now, Sachin, you have to wait as you are the man of the match for the match. 5 wickets has given 18 runs, I believe. Virat Shendulkar will correct the stats. 19 runs in 4 overs and 5 wickets. What a player turned out to be for Shirgao cricketers to make the victory look comfortable. So he's receiving the trophy and a cash prize of ₹1,000. That is the gift for the man of the match, the player who has made the difference. And that picture has been clicked by the guest while receiving the trophy. Sachin, 1 minute. Man of the match असा. Thank you, sir. एक कॅच इम्पॉर्टंट कॅच ड्रॉप जाली. खूब प्रेशर आमी म्हाका एज अ प्लेयर म्हाकाय खबर आसा जेन्ना क्रुशियल टायमार एक कॅच ड्रॉप जाता कितें चलतालें तकलेन. काय ना बॉलिंग बरी घालतलो आनी विकेटी काडटलो आनी बॉल रायट एरियस एंड गुड लेंथ एंड विकेट. एक्चुअली कितें जालें बाउंड्री लागीशी दिसली काय बाउंड्री क्रॉस जालो असो दिसलो कित्याक तूं बाउंड्री खूब लागीं आशिल्लो. ना हांव फुडें आसलो पूण कॅच मातशी वाऱ्यार फाटी येयली एडजस्ट जावंक ना म्हाका ताका लागून हांव बाउंड्री बॉलान कॅच सुटली. आय कॅन अंडरस्टँड म्हाका कळटा कितें आमी खेळटा आसतना जाता असलें कॅची सुटात काय म्हणून पूण तुजो कमबॅक व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्लो. सो तेन्ना तकलेन कितें चलिल्लें एग्रेसीव आशिल्लो म्हाका परफॉर्म करपाक जाय काय ट्राय करया आनी विकेट पडले जाल्यार पडले अशें कितें जात आयिल्लें तकलेन. बरी बॉलिंग घालतलो आनी विकेटी काडटलो आनी कॉन्फिडन्सान म्हाजे वरी आतां 4 बऱ्यो घालतलो आनी खरोच म्हाजे वरी बऱ्यो घातल्यो आनी मॅच जिखून गेमीन हाडली. सो म्हाका दिसता जेन्ना तुवें पयली विकेट काडली तेन्ना पयलीं तुवें पळयलो तो कॅप्टनाक. कॅप्टनाच्या तोंडार एक स्मायल दिसली की बरें दिसलें कॉन्फिडन्स आयलो. ओके, कंग्रेच्युलेशन्स फॉर युअर मॅन ऑफ द मॅच. And that's all from the presentation area. Thank you very much for joining. This is the end of the day 4. Myself, Sagar Gosavi, signing off along with the team of officials. With me, Sanket Gaonkar as the commentator Harish Kakotkar, Nilesh Naik and Ajit Shirodkar as the 2 judges out in the middle. Thank you on behalf of Sanguem cricketers. I see you tomorrow with the quarterfinals.